So, good evening, guys. जय हिंद. वार्म वेलकम टू CAPF AC मेंटर्स. जैसे कि आप सब लोग जानते हो, आज जो है CAPF AC की जो UPSC कंडक्ट कराती एग्जाम, वो कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है. एंड आई होप सब लोग अपने अपने पेपर को ना अच्छे से दिए होंगे. एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जितने भी मेहनत करके ये पेपर देने गए थे, सब लोगों का हो जाए करके. ठीक है. सो अभी आपको ना पहली चीज ये है कि आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है कि भाई मेरा पेपर कैसे गया है, क्या हुआ है, क्या सही गया है, यार उस टाइम पे मुझे ये करना था. ये सारे छोड़ दीजिएगा. ठीक है, पेपर हो गया है. यू हैव पुट इन योर एफर्ट्स एंड यू डिड योर बेस्ट दैट यू कुड डू. ओके. मतलब ये समझिए कि अभी क्या है, आपने अपना कर्म कर दिया है. बस फल की चिंता मत कीजिएगा. फल आ जाएगा तुरंत. ठीक है. UPSC अपने रिजल्ट में बता देगा. एंड रही बात की, जो पेपर वन की बात करेंगे, क्योंकि ये जो आज की एजेंडा है, द एजेंडा फॉर टुडेस लाइव सेशन इज टू गिव यू a proper understanding that how was the paper and is it uh, how is it in comparison with the previous year paper. Okay, that is previous years in the sense 2025 paper. Okay. And a basic understanding that I get from reading the question paper is this year's paper was averagely moderate. You may ask me, sir, why do you think it is moderate? See, most of the questions that were being asked, they were, let us take for an example, ज्योग्राफी लेते हैं या करंट अफेयर्स लेते हैं, हमेशा न्यूज में रहा है. तो वो आप देख सकते हो. या अगर आप देखते हो तो साइंस का देखोगे, तो साइंस का भी कई सारे सवाल जो है आपके एनसीईआरटी से फंस गए, तो उस टाइप में. ठीक है. तो पॉलिटी पॉलिटी भी वही रहा है. बट क्या आप पिछले साल से हाउ वुड यू कंपेयर इट? You would compare it that it is way much easier than previous year. Previous year's paper, that is the last year's paper, was quite dicey. It was you couldn't understand the depth that the UPSC was trying to get into. ओके. इवन ये क्या कहते हैं, जब कई सारे बच्चों ने कुछ सवालों में जो है, सर ये भी तो हो सकता है, कई सारी चीजें हुआ है आंसर की को लेके. ठीक है. Let us not get into the analysis right away of the already completed examination, जिसका फाइनल रिजल्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं. हम लोग देखेंगे 2026 का. ठीक है. पेपर मॉडरेट, एवरेजली मॉडरेट रहा है. ठीक है. अभी हमारे साथ जो है, हमारे इंस्टीट्यूट के वन ऑफ द एजुकेटर, हेरम पांडे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एंड वो जो है आपके पेपर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. ठीक है. वो बताएंगे कि पेपर कैसे गया है, कौन से सवाल कैसे थे, वो सारे वो आपसे डिस्कस करेंगे. हाँ, ये पूरे पेपर को डिस्कस नहीं करेंगे. जो इनकी एक्सपर्टीज है, सच एज ज्योग्राफी, साइंस, जो है हेरम पांडे सर की जो है एक्सपर्टीज है, तो वो उसके बारे में बताएंगे. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट अस वेलकम मिस्टर हेरम पांडे टू द लाइव सेशन. हेरम सर. सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. एक बार चेक कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही. हेलो, आवाज क्लियर है सर? यस यस सर, यस सर, प्लीज सर. So, hello students. So basically we are going to discuss the paper of geography and science section in the CAPF 2026. So basically हम start करेंगे geography से. So the trend we observe from this paper based on analysis of last year as well as this paper. The paper was basically from last year it was moderate to hard because it was more of analytical nature, but the trend seems to reverse and it has become more like an current oriented because many questions have been from the mapping section. And mapping section mostly that was covered, जो कि basically आपके डेली न्यूज में रहते हैं, ना कि लेसर नोन प्लेसेस जैसे. और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के जो टॉपिक्स थे वो मतलब बहुत ही सारे कम टॉपिक्स थे, 3 5 6 क्वेश्चन अप्रॉक्स उसके रिलेटेड हैं. बाकी में बेसिकली जो है वो मैपिंग के क्वेश्चंस हैं. सो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं. सो सो
हम लोग दोनों सेक्शन डिस्कस करेंगे, अप्रॉक्स 35 to 40 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन एंड साइंस सेक्शन इंक्लूडेड। इसमें हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 71 से अप्रॉक्स जहाँ तक ज्योग्राफी एंड साइंस बेसिकली पूरे कवर्ड हैं, वो हम उसको डिस्कस करेंगे अभी। जस्ट वेट अ मिनट। ये लो भी बांध दो, इधर ही बांध दो। हेरम सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके ओके। हाँ, आपको होस्ट बना दिया। सॉरी, डिले हुआ है। सो सॉरी फॉर द डिले। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 72 से 71, फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन इज, जहाँ से पूरे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो व्हेन वी सी दिस क्वेश्चन नंबर, सॉरी, when we see question number 71, so this question is already in the news from Feb itself, and jab US attacked Iran. So this question was easily solvable because it is covered in newspaper daily, and it ये तो अभी भी मतलब न्यूज में चल ही रहा है लगातार, कंटिन्यूअसली ये न्यूज में है. So this question was easily solvable, and the correct option here is option C. Okay, so now next move to the next question, 72nd. So again, this question related with Israel. The West Asia has been in news from the past around 1 year, and so the paper itself, you can see question number 72nd, question number 73rd also signifies the same thing. And these all are a mapping question, current oriented questions, which were easily doable rather than uh, any analysis or anything like that. In the question number 72nd also, we see that how the and Israel is an important theme of the UPSC. If you go back to the from different examinations of UPSC which conducts like civil services and CAPF as well, हम ये देखते हैं कि Israel, and this question you will even find in the UPSC CSC previous year question as well, bordering countries with the Israel. And okay, so this question also is correct from option D is where we find that it is the correct answer. So, and the next question again, Kharg Island, United States attacked it. It was in very big news because President Donald Trump asked that he will attack and take over the ownership of Kharg Island. So again, it is an current oriented topic, and these were all easily solvable questions and with major theme of West Asia. Now you see the question number 74, where it's question 74, where it find regarding industrial corridors. So in industrial corridor, we have this topic was again in news because in budget specific amount was allocated, and it is directly covered in the PIB section of the paper itself. So that is also solvable by current event only, and the correct answer which as per the PIB is option B, which is 1 and 3. Okay, so and next question 75. Now after five question we have uh, a conceptual question directly picked up from the NCRT section. So this question again, and NCRT se bhi, it was very easily solvable rather than time taking. It was easily solvable based on the basic knowledge of paper. And now again you see because of the news, sea lanes of communication, it is again, and that you will again find this that this paper this section nesting ground for leatherback sea turtle, and these all are around the Andaman Sea news, and you will again find many questions, 2 to 3 questions ahead that we have talked about in from with regard to Andaman and Nicobar.
So these questions are easily solvable. Here the answer itself seems to be Galathea Bay. Okay, so now next question, 77. Uh, Now this question again, these are basic, very picked up directly from the NCRTs. No play of words, directly picked up and made statements. So these questions are easily solvable, and I hope that you would have done it correctly, because there was not much to think on these questions. Okay, then next question, 78. This question basically, since recently you would have heard about Navik thing, that India satellites are getting dysfunctional. So GPS was directly related to the same topic. So uh, this topic itself is, most of the topic are current oriented, and not that you have to think too much. Again, this uh, here we have from the Andaman Sea, because of the Andaman Nicobar project. You would have heard every day it is covered in the newspaper that there is issue regarding ecological conservation and development of transport corridor on the Andaman and Nicobar Islands. So these all topics are current oriented and directly picked up from the daily news. There is no concept or anything. It is just a basic understanding of why these topics are asked. And the correct answer seems to be of Sri Vijaypuram in this section. Sri Vijaypuram. Okay. Now this again a conceptual question from the NCRTs, and these are basically we do not call it even conceptual, because these statements are picked up directly line by line from the NCRTs. So I hope that anybody with a basic understanding of the syllabus and who has been preparing decently for the last 1 year, so he would have corrected it easily, because these are very generic statements directly picked up. So I hope that you would have done it correctly. So again, these many urban and suburban areas, urban heat island topic, this urban heat island question. This is easily again, these are, so because climate change event, you now monsoon season is on, you will daily hear that there is an event of urban flooding and etc. These all are related to the urban heat island. Urban island effect is a major phenomena in the current times because of rising urbanization in India. So these topics are also uh, covered easily. Then question it, this again, this you see there are three questions from the same area, Andaman and Nicobar. One regarding Galathea Bay, one regarding Sri Vijaypuram, and now this. Very examiner, I think so, has not even done a lot of effort also to make statements. He has just taken a news. These things are directly covered in the topic by topic in the same area. So I hope that everybody would have easily solved it based on common understanding and awareness of the news. Now this west flowing river mapping questions have broadly covered the whole paper from geography section. West flowing river, these images are directly mentioned in the paper in NCRTs. If you go through NCRT class 11th India book, which is there, you will directly find that these are directly picked up from NCRT mapping. And these are not those rivers which are not covered. You would find it in CAPF PYQs as well, that these rivers are broadly covered. These are not something new, and these are always in news as well. When you see the Periyar River, when you see the Mandovi River, because of dam issue there is, so these rivers are broadly covered there, and most of the rivers are, I think so. Sorry, so here, see, three rivers are west flowing in this section. Okay, so 84th question. This question again, current oriented, but directly picked up from the PIB. PIB has given data year by year, FY23, FY24, and FY25. But examiner has directly made the statement that it is an increasing trend. It is, so that is the classical UPSC sentence framing, and the it is also decent, and second option is also correct. So we can go with both 1 and 2, and these are very decent paper. मतलब not हमें बहुत ज्यादा मतलब इसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि हमें इस चीज को कैसे करना है, because these things are very broadly covered in current affair magazines as well, and
basic sections of our syllabus. Now this question regarding ports. There is 12 major ports. Why this is mentioned? Just because Vadhavan port, everybody would have read that it is being developed as a 13th major port. So this is that why it is mentioned that 12 are in operation because 13th is being developed. It is not in operation. Very solvable paper with a basic understanding of the contemporary event. Everybody would have, I think, done it properly. Now coming to the 86th question. Basically, it is from the environment section. Environment section is basic understanding of the syllabus. Sorry, this is from, I think, science section. Sorry. SDGs. SDGs are also often in use because we are nearing to 2030, the year which we are going to complete our achievement of sustainable development goal. It is a target. Sorry, we are not going to achieve it. So this is also broadly covered in everyday discussions, and we even quote in our essays, etc., regarding SDGs. So I think so everybody would have uh, easily done this question. Okay. So now moving on to the next question, 88 number. This question also is solvable. UPSC has this year it has reduced the benchmark it has set last year because most of the questions are solvable by from the basic notes and the NCRTs itself because these are picked directly from the paper itself. So and the correct option itself, option is saying that not all the three are correct. So in this we can go with 1 and 2 because captive breeding is not an in situ practice. Captive breeding is ex situ. It is not an in situ. Everybody would be aware of the in situ and ex situ. Okay. So from here some science and that starts from here itself, 89. So genetic engineering topic. Again, when we discuss about the science, you will find that the science section has also come back to its what UPSC CAPF used to make rather than what it has done last year. पेपर काफी सॉल्युबल ट्रेंड पे एनसीईआरटीज ट्रेंड पे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स पे क्वेश्चन सॉल्युबल थे बाय रीडिंग इट प्रॉपरली सो द सेम थिंग व्हिच वी हैव डन इन ज्योग्राफी the same thing which we observed in geography, the same thing which we again observe it in the science section as well. That no, the paper was is the doable. We cannot say that it was very easy, but the section seems doable based on the understanding of ourselves of the paper. Sorry. So this question regarding genetic engineering. So again, these topics basically are on our understanding of the topic of genetic engineering that we have in NCRTs as well. And these topics are genetic engineering is now in the everyday news because there are new technologies and new way of disease treatment are emerging, which is directly based on the genetic engineering itself. And the option itself says that not all the three are correct. So basically, 1 and 2 option is correct. Now, when we come to the next, this topic again is from the NCRTs itself and very generic what UPSC classical sentence framing it has done in this paper, and it has come back to what it used to do it rather than trend setting paper. It is already based on the trend which was already set. So this will not be the young lake because eutrophication occurs in the lake which are older or where a lot of sedimentation occurs. Now this is a geography question. So image of following prominently observed. This is again not any scientific question, just a basic understanding of the syllabus and location of the poles, Arctic or Antarctic. It was you have to think even if you think you will think on Arctic and Antarctic line, and when you think calmly, it will come as Arctic region. Now question number 92nd. Again, this is from the biotechnology section. Previous one was genetic engineering. Now it is regarding DNA. So
in this, we observed again that the theme is similar. What UPSC has done from the previous year, that it follows its theme properly. So this is also, in this it is option 1, 2, and 3, where we find that all the three statements are correct. So the following factor responsible for spread of myxomatosis, and it has already explained that it is a viral disease among rabbits. So even if with a common understanding, you will find that in low population density, even exclude the rabbit section, you will find that anything with low population density, there are very less chance of viral disease. We observed this phenomena in COVID. Because of high population density, India witnessed a surge of COVID diseases. So this is again soluble with a common understanding rather than a very broad knowledge, because question itself has explained itself that what it's want to convey to you. So now next question regarding again, see the theme. It has repeated. In geography also we observed that it picked up Andaman Nicobar, it picked up West Asia, and now in this it has picked up genetic technology, genetic engineering, and it is repeating itself question after question. So in this question, it is the we have to identify the procedure. So it is again the option is this 1, 2, and 3, because the process itself goes like this. And I think this will even help the students जो कि next year 2027 के लिए prepare करेंगे, because हमें we can easily observe here that how UPSC is focusing on its theme and its previous year papers across various exams, not just CAPF itself. So, and this basic trend of not correct, I hope that सभी लोग इसको closely observe किए होंगे, because most of the time we tend to make mistakes. So it is regarding the catalytic conversion of regarding the leguminous plants. So the answer itself goes for this. This is an incorrect statement. Now it has come to, now it has moved from its topic. Now the topic has moved from genetic engineering to human biology. So again, it has asked incorrect. So the answer is again, it goes for D. Arteries do not have the thinnest wall. It is an incorrect statement. So, and this question now it has moved to the hemoglobin part, and the answer goes for Bohr effect. And these are classical scientific science, very general science, rather than what UPSC ने जो last year questions दिए थे उसके regard उससे comparatively it is a very doable and solvable paper, जो कि across हम sections भी observe करेंगे कि how UPSC has वापस अपने जो उनके basic resources हैं from NCERTs to previous year papers and thematic development of the questions, it has broadly followed that. So next question will be regarding that xylem and phloem, and it is repeating this question. We have to observe, हमें ये ध्यान देना कि बहुत सारे लोग इसके regarding mistakes भी करते हैं. So we have to understand this. Now it is regarding xylem vessels, and the answer goes for option B regarding plants. So and then following is basic structural element, very बेसिक अंडरस्टैंडिंग. इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन या ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें एक साइंटिफिक नॉलेज चाहिए. इट इज़ अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग. इवन क्लास 10th 12th स्टूडेंट्स नो दैट what is the basic structure element of all life forms. So I hope that people would not have done the silly mistakes, because ऐसे पेपर्स में हम भी ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं कि rather than conceptual or other mistakes, people commit silly mistakes. So I hope that you would have not done it. Now we have come to the plant's hormone, which promote during drought stress. Drought stress. So the answer goes for abscisic acid. The answer goes for abscisic acid regarding the. Now it is regarding the nuclear fuel.
अगेन वी वुड हैव हर्ड शांति बिल के बारे में सभी ने सुना होगा. शांति बिल रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी, इट वाज रिसेंटली पास्ड. सो शांति बिल के रिगार्डिंग हमने रिसेंटली पढ़ा होगा, तो जो कि डायरेक्टली यहीं से डिराइव वो क्वेश्चन है. और क्वेश्चन एक मतलब बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पेपर है. दिस इज व्हाट इज द जनरल साइंस rather than what UPSC asked last year in 2025. So I hope that everybody would have done it correctly. Now a basic understanding regarding insulin and all hormones. Uh, this too we get in our day-to-day communications as well, that insulin is related to blood hormone. Blood hormone. So from here we get two two questions, two options remaining. So this question again we can solve from. Then we go for hemoglobin, where we find that hemoglobin is regarding oxygen. Now this core question, fossil fuel. Again from the geography section, with a basic concept of anthracite and bituminous coals. हम लोग ये सब basic NCERTs and all these sections में cover करते हैं. And the answer goes for neither one, neither two, because ये it does not go from here to here, but it goes from here to here, bituminous to anthracite, rather than the vice versa. UPSC has done its classical sentence framing, what it does. So it's, and now next question is regarding directly it has asked that which is correct. So this question might have felt tricky for some, and the answer goes for option B is the one which is correct. So okay, so this is again you will find this question in very old UPSC CSC PYQ, directly picked up two options you will find in the PYQ itself, and these are basically covered in NCERT sections as well. So the answer goes for option B. It is just interchanged these two options, and these two options are directly matched. Okay, so again, renewable sources of energy, always in news, and in the current time it is very important. You will find here uranium, you will find here biofuel, ethanol issue is already going on, the fossil fuel issue, the climate, the carbon emission effects. So the option here goes for two and four, because question itself says it is very basic questions, very generic questions which can be solved by common sense. And now when you come to the 107th question, which are the following in the octane numbers and cetane numbers of the fuel. So both of these statements are incorrect, because UPSC has again it's done its classical sentence framing, which interplays with the sentences. Okay, so which are the following: petroleum obtained from petroleum distillation, and they're correctly matched. Okay, so in this the option goes for option B, where only 1 and 2 are correctly matched. Now this question, which are the following, is not for the production of hydrogen gas. The not element is already here, and you know that in processes like electrolytic process, in water steam process, these are not hydrogen is released in this process, hydrolysis of calcium carbide, because calcium carbide, it does not contain any hydrogen, so there is no question of releasing. So it was very easily elimination could have been applied, because all these three processes
because coal also has in some form hydrogen, because it has moisture in one or the other forms. Okay, so this question to the following is correct oxidation number of chloride ion in this. Okay, so here we go for option D. This is the correct oxidation numbers of chloride ion in the respective category. These were some of the questions which would have felt too tricky. So now sonar. Again, a very basic understanding of the topic, sorry, very basic understanding of the topic. Uh, we know that how sonar are applied in ships to detect the objects. So here ultrasonic waves are used. Now here comes the conceptual understanding of the resistance and resistor. So it is asking that when will be minimum resistance. So in minimum, it will only be when it is in parallel, because in series all gets added. So on adding it will be maximum, and on when it is in parallel it will be in minimum. So now this is a numerical section of the paper, and when you solve it, it is easily doable. You will find the answer as 19300, because here you will have to convert density of water into kg per meter cube rather than gram per meter cube, which this paper has given, and then you can easily solve it. Okay, so again here the numerical has come. So numerical were a little bit tricky on a trickier part, but all other questions, and this is the correct answer when you apply the respective formulas. So and on a uniform current narrow solenoid produces very basic understanding of current and all, gives you the correct answer as uniform magnetic field inside the solenoid, because when the current flows through a narrow solenoid, the magnetic field is also uniform. Okay, so for a particle of uniform, this is again a very conceptual question. A very conceptual question it has asked, and the correct answer would be C. Correct answer would be C for it. So, and which of the following is correct? Total mechanical energy of a system is conserved if the forces doing work on it are conservative, and it is the correct answer. And all the three are here goes for incorrect. And the question has asked correct rather than what it has asked in other papers as not correct. And here again comes, which of the following are do not obey Hooke's law. Which of the following do not obey Hooke's law? And the answer is clay. And it was solved by soluble by elimination also, because all the three are different things, and this stands out. This option stands out from others. Okay, so it is regarding the Carnot engine. This question was a little bit on the tougher side beyond the traditional sources, but it's okay. You have to you can leave these questions also, because these questions do not affect the cutoff very much. So in this, the correct option is option 2. The first one is incorrect. Okay, so no issues regarding such questions. You have to these are not cutoff making questions. Okay, so in ideal gas equation, a very basic understanding of the topic regarding ideal gas, and it goes for number of moles quantities. Okay. So this again it is an not correct. So we have to go for not correct, and the correct answer here is the incorrect answer here is option C. Option C is incorrect here. Again, 122nd paper question. Which of the following is best suited for transmission of information over large distance? So we know that very long cables are laid from Red Sea. We would have heard in newspaper that
ईरान जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही मतलब धमकी दे रहा था वर्ल्ड को कि इट विल कट डाउन द optical fiber underneath the Red Sea. So that was related to the same event. And now question this. Which of the following devices is used for converting digital signals into analog signals and vice versa? The correct answer here goes for modem. Okay. So, and then again, which of the following in the binary multiplication of number of 12 and 10? So this is one option A is the correct answer. And then how many what text alignments are there in the Microsoft Words? There are 4 text alignments. So this is we have analyzed the paper of geography and science sections. और मैं उम्मीद करता हूँ कि you would have a broader idea of how these 2 sections were there. So moving on to the next section, Harshit sir would join us with coverage of the topic regarding history, environment, and current affairs. Wait. Yes, sir. So, hello everyone. Let's start with the current affair history section and solve that part. Okay, let's start with that part. The part which is there is the current affair. Here the question asks for the SB64. What's the meaning of the SB64 and why it is in news maybe? The SB64 is often in news due to the COP, Conference of Parties, which happen every year. So SB stands for subsidiary body of UNFCCC. So you should have connected it to subsidiary bodies. There are 2 permanent subsidiary bodies over there. One is SB and one is SBI over there. So these are the meaning of that. So you should have gone with the option number D, since it 64 also is there. So you should have marked this one, 64th session. 64th is the session, and it happens usually in the Bonn, Germany. Okay. Let's go to the another part. As per the renewable energy statistics, India ranked third in the renewable energy installed capacity. ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के लिए। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने spoke it to the media that India ranks third in the renewable energy installed capacity, and it's in the current affairs. And PIB data, it's often in the news and used by the PIB also. So it's from that source. And on that same day, he also mentioned that India ranked fourth in the globally. Wind turbine capacity of the India has become fourth globally, and it stands at the 56 gigawatts currently. 56 gigawatt. Okay, so here the answer will be C. Okay, okay, fine. रघु राय, काफी ऐसे क्वेश्चन जनरली लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं कि कोई पर्सनैलिटी न्यूज में हो या कि कोई टर्म दिया हो कि क्यों न्यूज में था ओपन, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट कंसिडर किए जाते हैं। ये ओपन न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। ये काफी फेमस फोटो जर्नलिस्ट थे, एमिनेंट फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट थे। इन्होंने 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस पर भी इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। इंदिरा गांधी की पिक्चर बनाई थी इन्होंने, इसलिए ये इनकी अभी डेथ हुई तो ये काफी न्यूज में थे उस टाइम पर। अब हम आते हैं ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट पर।
होल चिकी स्क्रिप्ट के 100 साल हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली वहां पर। तो 100 कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी रिसेंटली, 100 कॉन्फ्रेंस हुई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड 200 ईयर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्क्रिप्ट। 200, यहाँ आप देखिए कितना बारीकी पर यूपीएससी ने इसमें फोकस किया है। 100th ईयर था, जबकि यूपीएससी ने 200 मेंशन किया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। स्क्रिप्ट हैज बीन यूज्ड फॉर द संथाली लैंग्वेज, सही है। झारखंड के एरिया में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसको 1925 में डेवलप किया गया था, इसलिए इसके 100 साल हुए थे अभी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब ब्लैक स्वान समिट काफी यूनिक क्वेश्चन था, रिसेंट में न्यूज में होगा इसीलिए पूछा गया है। ब्लैक स्वान समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। उड़ीसा तक सही है ये स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई यूपीएससी के द्वारा। तो दिस वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी नेटवर्क, GFTN। GFTN, ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क। ठीक है, and it was organized in the Odisha because it was part of the भारत नेत्र इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द उड़ीसा एज द फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स इन द डिजिटल टेक्नोलॉजी लाइक फाइनेंस, एडटेक एक्सेट्रा। So that's why this was organized in the Odisha with the help of GFTN। GFTN की तरफ हेल्प से इसको डेवलप किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली, इसका भी आंसर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आते हैं कुडान पुलर न्यूक्लियर प्लांट। सिक्स क्वेश्चन, was set up being in cooperation with the रशियन फेडरेशन। ठीक है, रशियन फेडरेशन के द्वारा साथ में इसको डेवलप किया गया है, नो कोई इशू नहीं है। कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 and 6 यूनिट आर बीइंग सेट अप इन कॉपरेशन विद द यूएसए। अब यहाँ पे हम लॉजिक से जाए तो आप ये सोचिए कि इफ कुडानकुलम 3 and 4 यूनिट आर सेट अप विद द कॉपरेशन ऑफ रशिया, देन हमने रशिया की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की होगी। हाउ इट इज पॉसिबल दैट यूएसए नया एंट्रेंट हो उसमें और वो ऑपरेशन में हमारी हेल्प करे? तो फिर हम टेक्नोलॉजी को सिनर्जाइज कैसे करेंगे? दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, वो वैसे ही नहीं पॉसिबल है। इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ये लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, इसकी कोई नीड नहीं। और कुरान गुलाम क्यों पूछा गया है, ये न्यूज में था। अब आते हैं शांति बिल के ऊपर। काफी कंट्रोवर्शियल था ये बिल। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया था न्यूक्लियर के फील्ड में। अंडर द लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर क्या होता है, अलाउ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अंडर द लाइसेंस फ्रॉम द टू। इसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप को कि दे नाउ कैन पार्टिसिपेट इन द प्लांट ऑपरेशन। जनरेशन में भी हेल्प करेंगे, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव allowed in certain nuclear fuel fabrication activities like conversion, refining, enrichment of uranium 235. Enrichment of 235 is also allowed under for the private companies। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है, इसीलिए ये उसी के अंतर्गत पार्ट था, तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही मानेंगे। अब हम आते हैं प्रमोशन ऑफ गेमिंग बिल्स। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जो गेम ऑफ रिस्क वाले ऐप हैं, या गवर्नमेंट गेम ऑफ चांस जो टर्म गवर्नमेंट ने यूज किए थे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 3 क्लासिफिकेशन बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा कि क्या क्या किस तरीके के गेम्स को गवर्नमेंट बैन करेगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी। इसमें पहला था ई स्पोर्ट क्राइटेरिया। ई स्पोर्ट्स में क्या था, दे लेजिटिमेट स्पोर्ट्स टू बी रजिस्टर्ड विद द डेडिकेटेड एजेंसी। एक एजेंसी बनाई गवर्नमेंट, उसके तहत उन्हें रजिस्टर करना होगा। सेकंड थे ऑनलाइन सोशल गेम फॉर द एजुकेशन पर्पस, रिक्रिएशनल पर्पस, समथिंग लाइक दैट। एंड थर्ड सम ऑनलाइन मनी गेम, जिन्हें गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन कर दिया था। तो अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट शेल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू रीऑर्गेनाइज, recognize, register esports with the agency authority as the case may be legitimate form of competitive sports in India। सही है। The central government shall facilitate the development and availability of online social game for recreation and education purposes। सही है, ये भी अभी मैंने आपको बताया।
द एक्ट प्रोहिबिट्स ऑनलाइन मनी गेम्स एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे, काफी ज्यादा सुसाइड्स के केसेस बढ़ते जा रहे थे, लोग लोन ले लेके ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज का ध्यान रखते हुए इस तरीके के ऐप्स को कंप्लीटली गवर्नमेंट हैज बैंड ऑल काइंड ऑफ apps like this. So that's why answer should be first, second, and third in this part. Now let's move to the military exercise. Very important part for the CAPF exam. CAPF के लिए डिफेंस एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सबने सही किया होगा, बिकॉज काफी इजी क्वेश्चन था ये। लेमिथी एक्सरसाइज एक्सरसाइज गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, वो इंडिया और सेशेल्स के बीच में थी। सही आंसर है ये। टेस्ट लीग होती है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, नॉट इंडिया एंड अजरबैजान। So this statement will be wrong. Cyclone 4 was a joint military exercise between India and Israel. India and Israel. तो ये गलत होगा, क्योंकि साइक्लोन 4 थी वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में थी, ना कि इंडिया और इसराइल के बीच में। इसका आंसर होगा वन ओनली। Which of the following statement with the regard to Mundial do Fujo do Brasil is correct? ये पीएम मोदी congratulated the Indian cheese maker for the performance in this चीज और डेयरी कंपटीशन था, ये ब्राजील में होता है। इसमें इट वाज एन इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर द चीज एंड डेयरी प्रोडक्ट। वेरी नाइस, पहला स्टेटमेंट सही है। 4 Indian products won medals at the competition. That's why PM Modi has congratulated the team because they have won the 4 medals, one super gold, 2 gold, and 1 silver. That's why our Prime Minister has congratulated them. So answer must be C here. Let's move to the another section, come to the history, and one current affair question is also there. Anna Chakra. Anna Chakra is the PDS, Anna Chakra PDS supply chain optimization in an initiative launched by Government of India to enhance the efficiency of the PDS logistic network across the country. Which one of the following institution has collaborated with the International World Program? इसका आंसर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया, ने इसके साथ कोलैबोरेट किया फॉर द PDS अन्न चक्रा। इसके तहत गवर्नमेंट ने एफिशिएंसी बढ़ाई है इनका जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है उसके लिए। इसके तहत वो शॉर्ट जो ट्रक्स का मूवमेंट होता था फूड ले जाने के लिए, ग्रेन्स ले जाने के लिए, उसको मिनिमाइज कर दिया गया है। सपोज करिए पहले कोई ट्रक जाता था इस तरीके से रास्ते से, ये डेस्टिनेशन था। अब ट्रक को जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो चूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मॉनिटरिंग होगी एक AI के थ्रू। तो ये इस तरीके का इनिशिएटिव था, इसको IIT दिल्ली ने इसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया है। अब हम चलते हैं 26 क्वेश्चन के ऊपर। Which one of the following events of Indian history was the earliest to take place? दांडी मार्च, चौरी चौरा इंसिडेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले दांडी मार्च का देख लेते हैं। 1930 में गांधी जी ने भी। चौरी चौरा इंसिडेंट NCM के बाद हुआ था, नेशनल कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। तो इसको 1922 में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो हुआ था ये। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 1905 में वेरी वेरी फेमस। चंपारण सत्याग्रह was organized in 1970. Then the answer must be partition of Bengal, since it has happened in 1905. The first book, which of the following statement? The first book in the Tamil script was printed in 1578. Okay, the first printing press at Bombay was imported from the England by the efforts of Gimchi Pare. So the Thambiran Vanakkam was the first printed book, printed script or the printed book in 1578 by the Portuguese ने इसको पब्लिश किया था, फर्स्ट प्रिंटेड बुक के लिए 1578 में। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, थम्बीरान वड़क्कम। थम्बीरान वड़क्कम was the book published. So first statement will be true here. Second, the printed press at the Bombay was imported from the England
by the efforts of Inji Parekh. This was also correct. So both the statements will be correct here. So answer must be C. So very tough question. I will say this one is quite tough question. Kash, Ulf, Majhul. So we have to match the books related to them. तो कश मतलब इन्होंने क्या किया था? सो इन्होंने ये काश उल्फ मजूब थे, ये सूफी डॉक्ट्रिन से रिलेटेड थे बेसिकली। तो हम पहले ट्राई करेंगे कि इनको जो मिनिमम इनका जो एक डॉक्ट्रिन के जो फेमस है उससे रिलेट कर पाए। ए का डी होना चाहिए, ए का टू होना चाहिए, ए का टू, ए का टू, डी का फर्स्ट और फोर्थ में से अब होगा। तो फवा बिन अल फुआद, फवाद अल फुआद ने क्या किया था? रिकॉर्ड द मलफूजात conversion of the discourses related to the Sheikh निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया बहुत फेमस सूफी सेंट है बेसिकली। तो बी का फोर्थ होना चाहिए इस सेंट में। इसका आंसर भी सी मार्क हो जाएगा। बाकी आप मैच कर सकते हैं कि इनकी जो किताब थी सीआर उल औलिया की, सीआर उल औलिया की किताब थी जो नेचर ऑफ कंपोजिशन था वो रिलेट करता था बुक में बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सेंट्स। अब आते हैं हमार न्याय सिस्टम, न्याय का सिस्टम, हमार न्याय का सिस्टम किससे रिलेटेड है? प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी में मेंशन। तो हमार न्याय का सिस्टम क्या था? ये दिस वाज प्रेवलेंट इन द विजयनगर एम्पायर। सबसे पहले मैं इस नॉट का फोकस करना पड़ेगा। इट वाज अ मिलिट्री, was a vision prevalent in the Vijayanagar Empire, and Amar Nayak was military commanders appointed by the Vijayanagar rulers given territory to govern, and the territory is referred as Amaram to govern. They collected taxes and retain a share of that. Means they were given the land, they have to grow crop or something like that. They will you collect the taxes from that land, and they will use some part of that tax for their personal benefit. Like government will not pay salary to them, they will have to use that part of some part of money from that for their personal benefit. This is the pure meaning of that. And these positions were transferable basically. They were not hereditary, since the king could reassign or revoke them. Ultimately, king was the real authority, so they can be transferred basically. So Amar न्याय system was a major political innovation of the group. ये major political innovation था। अमर नायक was military commander, as I mentioned कि ये military commander थे जिन्हें राय के द्वारा दिए गए एक लैंड दी जाती थी। अमर नायक has collected taxes and retained part of the revenue for the personal use and maintaining contingent। सही है। The territories held by the Amar Nayakas were hereditary, long statement, and were non-transferable। किंग ट्रांसफर भी कर सकते थे और रिवोक भी कर सकते थे। किंग इज अल्टीमेट अथॉरिटी। तो ये क्वेश्चन, ये डी ऑप्शन है वो गलत है। सिंस द क्वेश्चन ऑप्शन आज इज डी, दैट नॉट करेक्ट। क्या होगा इसमें? Which of the following is an offshoot of the Chaitanya tradition originating in the Nadia in West Bengal? Nadia एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में। नादिया इन बंगाल फॉलोड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। एक शरण धर्मा का हम पहले देखते हैं। एक शरण धर्मा है, ये असम में ओरिजिन हुआ था इसका। शंकर देव जी के द्वारा इसका ओरिजिन किया गया था। शंकर देव नियो वैष्णव के सेंट से, नियो वैष्णव। एक सत्तरिया डांस भी है, वो भी इनसे रिलेटेड है, काफी फेमस डांस है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये नादिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर आपको इतना पता है कि ये शंकर देव से रिलेटेड है तो असम में है तो नादिया में नहीं हुआ होगा। पहला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, वेरी इजी। अब सेकंड है, ये जो ट्रेडिशन है ये सहजिया है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू हिंदू एंड मुस्लिम। तो द करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन, दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। बॉडी ऑफ वैष्णविज्म है, ये रिलेटेड है चैतन्य महाप्रभु। दिस इज द चैतन्य ट्रेडिशन फाउंडेड बाय चैतन्य महाप्रभु इन नादिया। सिंस द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर द offshoot, but this was not followed by the Muslims. So the correct answer in this situation will be, this was originated in the Nadia, but this was not followed by Muslims. So Gaudiya Vaishnavism is particular sect of Vaishnavism, and but so the answer will be D.
and the bowl forms are very famous. So bowl will be the answer. ये डिवोशनल फोक ट्रेडिशन है जो कह सकते हैं कि सूफी और गौड़ीय वैष्णविज्म इन दोनों का एक सिंक्रेटिक मिक्सचर है। इसीलिए इसमें गौड़ीय वैष्णविज्म आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि गौड़ीय वैष्णविज्म पर्टिकुलर सेक्ट से रिलेटेड है, कि वैष्णव वैष्णव ट्रेडिशन से रिलेटेड है। वो उसमें मुस्लिम्स का इंटरफेरेंस नहीं है, उसमें सिर्फ सूफी का इन्फ्लुएंस नहीं है सूफिज्म का। और जबकि बाउल है वो सूफिज्म से रिलेटेड है पर्टिकुलरली। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट वेरी टफ क्वेश्चन। जवाब 9, जिंक वाज प्रेजेंट मिक्स विद द आयरन लेड सिल्वर। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। जवार वाज कॉम्प्लेक्स पॉलीमेटेलिक सल्फाइड होता था जिसमें सब कुछ यूज होता था, लेड, गैलेना, गैलेना जो कि मरकरी का और है। तो ये सही स्टेटमेंट है। बाय 14th सेंचुरी जिंक began टू बी आइसोलेटेड बाय द डिस्टिलेशन मेथड। ये बाय 14th सेंचुरी, ये सही है, ग्लोबली सिग्निफिकेंट, क्योंकि रेनेसा का टाइम था। रेनेसा के टाइम पे ऐसी प्रैक्टिस इनोवेट हो ही रही थी, तो उसका हम ध्यान में रखें तो धीरे धीरे इसका आइसोलेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस से होने लगा था 14th सेंचुरी के टाइम, क्योंकि डिस्कवरी तो बहुत पहले हो चुकी थी इसकी। बट द रियल कैच कम्स हियर। Abul Fazl describes zinc as a newly discovered metal unknown to the ancients. So, according to me, the answer will be 1 and 2 in this situation, because in Abul Fazl का एक टेक्स्ट है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने एस जिंक के बारे में मेंशन किया है, बट उन्होंने कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ये एक अननोन मेटल था। ये ये उनके द्वारा डिस्कवर किया गया है। ये अननोन मेटल था ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। डिस्कवर जिनके बारे में उन्होंने मेंशन किया है, बट उन्होंने ये बिल्कुल मेंशन नहीं किया है दैट इट इज न्यूली डिस्कवर्ड और अननोन टू एंशिएंट। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग एंड 1 and 2 विल बी द आंसर। अब इसको हम अगर बेसिक नॉलेज से देखा जाए तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड मेंशन ऑफ द वर्क फॉर द एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। अब जो भी थोड़ा से रिलेटेड है ज्योतिष से, तो उन्हें थोड़ा आइडिया, इस क्वेश्चन को जज किया जा सकता है, इजीली मतलब सॉल्व किया जा सकता है कि एंशिएंट ट्रेडिशन में किस तरीके की निगरानी ऑब्जर्वेशन से क्या क्या सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में चर्चा होती थी। दूर हमारे टेस्ट में भी मेंशन है और काफी रिसर्च भी हुई है इसको जो है। तो ये नहीं होगा, नॉट पूछा है, क्योंकि दूर मरकरी के बारे में बात की जाती है, यूरेनस के बारे में बात की जाती है, नहीं की जाती है। वीनस के बारे में बात की जाती है, लेकिन यूरेनस एक इनविजिबल था और इसको डिस्कवर ही जब 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा टेलीस्कोप से किया गया। विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप के द्वारा जब इसको इन्वेंट डिस्कवर ही किया था, तो कैसे पॉसिबल है कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर ने इसको के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। तो आंसर इसका यूरेनस हो। बाकी सारे टेक्स्ट वगैरह में सब में सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, वारामीर, ये सब ने इन सब के बारे में बता रखा है कि सन के बारे में, मरकरी के बारे में, वीनस के बारे में। यूरेनस के बारे में नहीं बताया। मैं एक बार इसका अच्छे से आपको बता देता हूँ कि यूरेनस के बारे में नहीं बताया है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है, जो कि नॉट पूछा गया। अब कोडू मनाल के बारे में पूछा है। कोडू मनाल क्या है? कोडू मनाल बेसिकली अगर हम नाम से भी समझें तो इसमें एक पर्टिकुलर साउथ इंडियन नेम है बेसिकली। तो देख सकते हैं कि कोडू मनाल किससे रिलेटेड होगा। ये सबसे पहले ये रोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात आ जाएगी, तमिलनाडु, साउथ इंडिया, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हो सकता है। ये एक था कि ये इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेंटर था अंडर चेरा डायनेस्टी, आइडेंटिफाइड। संगम लिटरेचर में इसका मेंशन है, लेकिन जब भी इसके बारे में बात होगी, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ओके, सही है। जस्ट अ मिनट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रेफर टू कन्फेडरेसी ऑफ तमिल स्टेट्स। कौन तमिल स्टेट्स के बारे में पर्टिकुलरली मेंशन करता है? जो तमिल कॉन्फेडरेसी थी, मतलब तमिल जो साउथ इंडिया था, वो बल्कि एक कॉन्फेडरेसी था तमिल स्टेट्स का।
हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है खारवेल। खारवेल कहाँ रूल कर रहे थे? उड़ीसा, नियर बाई एरिया है। इलाहाबाद समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। जो 17th लाइन है ऑफ हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, इसमें पर्टिकुलरली मेंशन्ड है दैट जो साउथ इंडिया था वो बल्कि कन्फेडरेसी था एक बहुत सारे स्टेट्स का, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स का, तमिल स्टेट्स का, जिसका टर्म उसमें यूज किया गया है हाँ, त्रि संगठन, त्रिमरी देश संगठन। ये यूज किया जा रहा था कि वहां पे बहुत सारे, एक एक कन्फेडरेसी है जिसका 113 साल तक उसने करीब रूल किया होगा, इस तरीके से उसमें मेंशन है। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की 13th लाइन में मेंशन है, 17th लाइन में, सॉरी। अब इसके बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन सीधे लूसेंट की एक लाइन से बना हुआ है। लूसेंट में अगर किसी ने, और एनसीईआरटी का भी है, मैंने देखा हुआ था, एनसीईआरटी में और लूसेंट दोनों में इसका डायरेक्ट आपको सोर्स मिल जाएगा। तो ये काफी इजी क्वेश्चन, मैं इसको कंसीडर करूंगा। ऐसा लग सकता है कि ये टफ क्वेश्चन हो सकता है, बट पर्टिकुलरली मेंशन्ड है, इसलिए आप इसका एक बार रीड कर सकते हैं इसको अच्छे से। अब आते हैं, which of the following Vedic deities was considered the guardian of the compact and the marriages? Compact and the marriages के गार्जियन कौन है? आर्यमन है, जो प्रोटेक्ट करते हैं सोसाइटल हार्मनी, इनको कंसिडर किया जाता है एक गॉड है उस चीज से रिलेटेड। एंड द गार्जियन ऑफ द सेक्रेट कॉम्पैक्ट, कोई अगर शपथ लेता है ओथ वगैरह से रिलेटेड, मैरिज बॉन्ड से रिलेटेड, तो इसके ये है आर्यमन। मे बी मैरिज को देखकर उसने, जिसने भी ये पेपर सॉल्व किया है, नहीं मारा है, लेकिन इसका आंसर होगा आर्यमन। आर्यमन जिनका वन ऑफ द आदित्य है, जो सोलर डेटीज कंसिडर किया जाता है उन्हें, सोलर। In which one of the following Vedas does the term Goth appear for the first time as representing a clan? Very important question and very tricky question also. गोत्र है वो पहली बार ओरिजिन हुआ है ऋग्वेद में, बट ऋग्वेद में ये यूज किया जाता था काउ पेन के रेफरेंस में, कि जहाँ पे गाय गाय को रखा जाता था या गाय जिस जगह पे रहती थी उसके रेफरेंस में इसको यूज किया जाता था, काउ पेन के रेफरेंस में गोत्र को। बट जब अथर्ववेद आया, अथर्ववेद में इसके इसको यूज किया जाता था क्लैन के रेफरेंस में, गोत्र को यूज किया जाने लगा क्लैन के रेफरेंस में, इसलिए इसका आंसर होगा अथर्ववेद, ना कि ऋग्वेद। तो वेरी नाइस क्वेश्चन। द डिसेंट ऑफ द गंगा, वेरी इजी क्वेश्चन एंड वन ऑफ द पीवाईक्यू है, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है कि डिसेंट ऑफ द गंगा is related to the Arjuna's penance basically. So the relief structure at the Amalapuram can would be the answer here. So Arjuna's penance है, इसको मैसे ओपन एयर बेस्ड रिलीफ है। तो दो मोनोलिथिक बोल्डर्स हैं ममालापुरम में। ममालापुरम वेरी फेमस साइट बिकॉज created in the 17th century by the Pallava ruler. I think Narasimhavarman was there. नरसिम्हा वर्मन इन्होंने क्रिएट कर किया था। तो इसमें एक related है, descent of the Ganga is related to the Arjuna's penance which is situated over there, and so the answer will be the Mamalapuram in this situation. Among the following congressmen was not a member of the no changer. नो चेंजर, नो चेंजर के बारे में देख लेते हैं। प्रो चेंजर क्या थे? जो चाहते थे कि हम फेवर करें लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनके अंदर जाएं। और प्रो चेंजर के बारे में बता रहा हूँ मैं, जो भी चाहते थे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनको अच्छे से यूज करें और वहीं पे जाके लड़ाई लड़ें कि हमारे हमें रिफॉर्म दीजिए, हमारे लिए काम कीजिए आप लोग। ब्रिटिश सरकार से ऐसा कुछ करते थे, ठीक है। तो वो लोग काम करते थे इससे रिलेटेड। तो इसमें एक सेक्शन थे, इसमें जो सेक्शन थे, आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट इज एनसीएम इन द 1922, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, कांग्रेस में दो फैक्शन हो गए थे, प्रो कांग्रेस, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर। प्रो चेंजर बेसिकली क्या करते थे कि वो चाहते थे काउंसिल में जाकर हम वहां से विद्रोह करें, वहां से लड़ाई करें। उसको रिप्रेजेंट करने वाले थे कौन कौन थे प्रो चेंजर वाले में? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, विठल भाई पटेल। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, विठल भाई पटेल। And among the no changers who opposed the council entry wanted to
you constructed program like the non-cooperation movement, and they want revolt on the road. So that's why, and the no changes were led by C. Rajagopalachari, Rajendra Prasad, and Vallabhbhai Patel. So here the answer will be Vithalbhai Patel. Vithalbhai Patel will be the answer, since he was a pro changer, not the no changer. Arrange the correct in the formation of the chronological order में इसको हमें arrange करना है, तो हम इसको देखते हैं कि ये कब कब हुआ है. अब आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? आजाद हिंद गवर्नमेंट, सॉरी, 1943 में आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाई गई. सेटिंग ऑफ द इंडियन लीजन बनाया गया 1941-42 में. हरियाणा के जो ट्राइब्स उनकी शुरुआत हुई 1945 में, और जो बॉम्बे की नेवल स्ट्राइक हुई थी वो 1946 में. अब 1941-42 में सबसे पहले इंडियन लीजन की जन्म हुआ 2. उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट 1. उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द INA ट्रायल्स वर देयर, तो थर्ड विल बी द आंसर, एंड फोर्थ विल बी देयर. Correct sequence will be 2, 1, 3, 4. So correct answer will be A in this option. Who among the following was appointed by the Constituent Assembly? Constituent Assembly का जो सब कमेटी थी उससे कौन किसको हेड बनाया गया था? For the North Eastern Frontier Assam tribal and excluded areas. The proper committee for that, the proper committee related to the North Eastern Frontier Assam and tribal and excluded areas was headed by the Sardar Patel. But the subcommittee of that region was held by Gopinath Bardoloi. That's why this committee was also referred as Bardoloi Committee, and he was from the Assam. And other member were also there who was representing. Rupnath Brahma was representing tribal interest in that committee. He was not the chairman. She was not the chairman. He was representing the tribal interest. Now let's move to the environment section. Since this was already covered by the sir, so I will skip this part. So I hope my section is done. Most of the part is done from my side. Okay, let me. City conservation is correct. Correct the regarding the. So in situ. Okay, this one is related to biodiversity. Okay, fine. Which of the following is correct? In situ conservation refers to the conservation of species in their natural habitats. Okay, that one is correct. So apart from that, natural reserves are areas specifically designed for the wildlife conservation. Very nice. This statement is also nice. Correct. The captive breeding of the animal is an in situ conservation measure. This one is captive breeding. So we are putting them out of their internal or the natural environment. So ultimately, it can't be the in situ. This must be the ex situ. Ex situ होगा तो third statement is wrong. And this will be the answer. Now let's come to the eutrophication part of 91. 91. Which one of the following region of the Earth in the whole primarily observed in the stratosphere? अब बहुत ही ज़्यादा repeated, one of the repeated question in every exam this is asked, and so answer will be the Antarctic region. Let's move to the computer part. I will solve you this PYQ. The binary multiplication of this number will be 12 and 10. So the 12 into 10, 120. Now we have to break down it. 120 divided by 2. Keep on dividing that. After dividing, you will observe that the remainder will be 1, 1, 1 and 0, 0, 0. So answer will be this one. And in the last 125, how many text alignment are there in the Microsoft Word? When it comes to the Microsoft Word, there are 4 types of alignment, like
alignment left, alignment right, center, and justify. And particular shortcuts were also there for them. So that's all from my side. Now my section is complete. Now Aditya sir will take over the session, and he will continue with the part related to current affair, related to polity and other things. Good evening, everyone. Yes, sir. I hope I am audible and that is visible to you. Okay, so let's start with economics. So talking about the exam was a bit on the moderate side from the economic section. The paper was a bit more factual. So let's start the questions. You know that recently the labor reforms were made, and there we have added some provisions like the reskilling fund. Okay, so the question was from this part only, the reskilling fund. Okay, the reskilling fund is that fund where the workers who are the entrenched workers means that they have been सर terminated. थोड़ा माइक पास में रखो और क्वेश्चन पेपर जूम कर लेना. Okay, is now this okay? Hello. Yes, Can I sir. know this? Okay. Yeah. Okay. So talking about the reskilling fund, you know that recently the labor reforms has been introduced. Okay. So from that the question has been come. Okay. So what is this reskilling fund? This reskilling fund is nothing but a fund. Okay. I'm so sorry for. Wait. Okay. The workers, the entrenched workers who has been terminated from the organization, they are entitled to receive this fund. What is the composition of that fund? That 15 days salary from the last drawn salary. Okay, last drawn salary, and it has to be credited into the worker's account within the 45 days. So the statement is correct. Okay, the Industrial Relation Force 2020 introduced reskilling funds by an industrial establishment, which is equal to 15 days wages for every worker re-entrenched in addition to the re-entrenchment compensation. This is the additional compensation. This is the additional fund. Okay, this is the additional fund which has been to be credited in the worker's account within 45 days of the re-entrenchment. So this statement is correct. Okay. With respect to the trade union recognition, any union with 41% membership shall get recognition at the negotiation union as the negotiation union. You know that we have made some changes regarding the trade union, where the union which has 55% of membership, okay, that will be called as the sole negotiating, okay, sole negotiating union. Okay, and what about if no union receives 51% subscription? There the provision is that the those union who has 20% membership, representative from these unions can form negotiation council. Okay, this is different from negotiation union. Okay, so this statement is wrong. Here the percentage will be 51%. Okay, so the correct answer is A, which is A only, one only. Okay, now coming to the next question. Okay, in context to the labor market of an economy, labor market means the population which are aspiring for work. Okay, consider the following statement. Labor force participation rate is defined as the share of employed and unemployed workers to the total working age population. So the statement is correct. Actually, what is this labor force participation rate? What, LFPR? It is the uh, those who are employed as well as unemployed upon the working age population. Okay, working age population is nothing but population
which is above 15 years of age. So this statement is correct. Okay. Now talking about the worker population ratio. What is this worker population ratio? By the name, it is understood that the worker who are employed means, okay, who are employed divided by total population. So here the question tells about the worker population ratio is defined as the share of unemployed worker, which is the wrong statement. Okay, here the statement will be employed workers. Okay, employed workers to the total working age population. So second statement is wrong. Okay, now talking about the third statement, the usual activity status of a person is to be determined. Okay, there are multiple ways through which we determined the employment rate of India. Usual principal status, usual principal and subsidiary status. These are the composition that forms the usual activity status. Means if you are employed, let's say 30 days in a year, you are considered as the employed. Okay. So of a person is determined on the basis of activities pursued by the person during the specific reference period for the last 365 days preceding the date of the survey. So this statement is correct, and the question was from the static part itself. So I hope you have done correct. You have marked the correct options, and the correct option would be option C. Okay, 1 and 3 only. Now coming to the third part, talking about the orange economy. I suppose the orange economy question was from the economic survey of the previous year, where they talked about the orange economy. So what is this orange economy? You know that economy is consisting the economy which is consisting the media, okay, creativity field, okay, media from the YouTube section, gaming section, okay, from the handicraft section. These are the sections which consist of the orange economy. So now coming to the options, economic activities linked to the creativity, culture, and intellectual property that generate income and jobs. So this option seems to be correct. Now let's talk about the second option. What about the second option? Economic activities linked to desert ecosystem and their unique socio-environment characteristics. There is nothing such economy which talks about the desert ecosystem. Okay, so this option is incorrect. Now talking about the third statement, economic activities linked to the aging population, including healthcare, leisure, and service for the older section. What is this economy known? This is known as the silver economy. Okay, this is known as the silver economy for the aging population. Informal, unaccounted, or illegal economic activity that evade taxation and regulation. This is known as the parallel economy or black economy. Okay. So our correct option will be option A. Okay. Now coming to the 14th question, I am solving set D. Okay. Coming to the 14th question of the set D, India stands at number one at the global level in the production of which of the following item? Actually, you know, this question has been come from the topic that India and USA signed some deal, and in which the dairy sector was being open for the USA market. So here you have to identify at which sector India is the number one. Okay, in the milk sector, you know, India is number one because India roughly produce 25% of India has the 25% of the global production. Okay, capacity, global production capacity. And what about the steel and wheat? India comes second. Okay, after China. So our option will be C only, first only. Okay, uh, only one milk is the correct option. Okay. Now coming to the 15th question, which one among the following elements is not a part? Not actually, you have to write the not. Okay, not a part of the Panchamrit India's climate. What were the targets in the Panchamrit? Can anyone please tell me? First target was to achieve the 500 gigawatt of energy from non-fossil fuels. Okay, first was this target. Second was, what was the second target? That more than 50% of its energy from which thing? From renewable energy sources. So first option is correct. So we have to mark the not. So this is the correct option. Okay. Coming to the third target. Third target was the reduction of the carbon intensity of the economy by 45% of the by 2020 over 2050 level. What's the level of the carbon dioxide in 2005? We have to reduce that level by 45%
by 2030. So option C is also correct. So we have to mark not. So this would not be the option. Okay. Coming to the last target, second last target. Second last target was the reduction of the total projected carbon emission by 1 million ton by 2030. By 2030, we have to reduce the 1 billion tons of carbon from our environment. So this option is also correct. So it is not the option. The last target was, which was the very controversial target, and which was the very aspiring target. The target was that the India will achieve its net zero by 2070, not 2047. So we have to mark the not. So this would be the option answer. Okay. Now coming to the 16th question about the production linked incentives. Okay, what is the production linked incentives? Okay, it aims to increase the share of the manufacturing sector in India's GDP to 25%. Actually, currently the contribution of GDP to Indian economy, manufacturing sector contribution to India's GDP is roughly around 17%. So the target was to reach its contribution to GDP to 25%. So this seems to be correct option. Now let's read the further part of the question. And claims it placed among the world's leading industrial economy. This is the general statement. So this statement is correct. The scheme extends an incentives of 10 to 14% on incremental sale for a period of 5 years subsequent to the base year. 5 year is correct. 10 to 14% is not correct, because what is the thing is that, in the mobile manufacturing sector, what we are providing 4 to 6% of the incremental incentives of the incremental sale value. What is this production linked incentive? That the more you will produce, you will receive the incentives of your cost. Okay, so 4 to 6% incentives will be given in the mobile sector, and in the advanced chemical cell, the incentive is up to 20%. So it is beyond the level of the 14%. It is below the level of the 10%. So, and what about the automobile sector and auto component sector? There the incentives is around 13 to 18%. Okay, so this option is incorrect. Okay, so we have to mark only A. So 16th answer would be A. Okay, now coming to the 17th question. Okay, 17th question is global innovation index. Global innovation index is released by which body? It is released by okay, please wait. Okay. So yeah, global innovation index is released by WIPIO, means World Intellectual Property Organization. Okay, so you know that it was launched in 2007. It is the correct option. It is the factual part. Okay. Recently, India has marked a significant jump in the Global Innovation Index from 81st in 2015 to 38 in 2025. It is the correct option. Okay, that's why this question has been came in the paper, has came in the examination. Okay, now coming to the third statement, that India, Bangladesh, Indonesia, the top three innovation economies in the category of the lower middle income group. Means the companies which are developing, which are coming in the range of the lower middle income group as per the Global Innovation Index of 2025. This statement is wrong, because in the lower middle income countries. Okay, so the first position, okay, although the India's position is 38, but coming only categorizing them into this lower middle income company, that Bangladesh would never be to the near would never be in this list of this global innovation index. So first position is surely acquired by India, and then the second position is acquired by Vietnam. Actually, its position is 38. Its position is, I don't know, it's between I suppose 46 to something, and the third is acquired by Philippines. Okay, so this statement is incorrect. Okay. Bangladesh position is very far. It's approximately 96 or something. But India, and then Vietnam, and then Philippines. So this statement is incorrect. Okay. Coming to the last statement, France, Germany, and the USA are the top three innovation economies in the category of high income group. In the high income group, top three countries are Switzerland, Sweden, South Korea. I'm so sorry, and then USA, and then South Korea, and then Singapore. Okay, so
This statement is also incorrect. So correct statement would be option A, 1 and 2 only. Okay, are you getting it? Coming to the 18th question. Okay, consider the following statement: investments in an economy by the foreign company. Okay, we have to mark about the investment, which is the foreign by the foreign company known as the FDI, foreign direct investment. You know there are two types of FDI which comes to India. One is the brownfield, okay, and one is greenfield. What is the greenfield and brownfield economy investment? In the greenfield investment, we start from the scratch. Okay, for example, if some company is coming to India and they are starting from the scratch, they are setting up new facility in India. Okay, okay. Can you please tell me that the scribble is visible? Is the screen moving or it is visible? Because I suppose the 17th scribble I'm not able to see it. Can anyone please confirm? Is scribble visible to you guys? Yes, yes, visible है. Zoom कर लो sir. I am at the 18th question, but I am not able to see the scribbling after the 17th question. Okay, are you able to see the scribbling over the 17th question? Lower middle income and all these things. Can you please confirm? I'm Yes just sir, writing. 17 18 क्वेश्चन पे हो आप, बराबर है. Okay, okay, okay. Actually, I'm not. My screen has been frozen. I don't know why. Okay, no issues. Consider the following investment. Actually, there are two types of at the FDI. There are two types of investment. That is the brownfield FDI and second one is greenfield FDI. Greenfield FDI is where the company starts from the scratch. They set up new facility. Okay, and what about the brownfield investment? That they purchase existing business or they lease out existing business. Means existing business is there and just they are purchasing. For example, the Walmart purchase the Flipkart. Okay, so we have to talk about the brownfield investments. Okay, now coming to this: purchase of the ownership of a transport company, purchasing of a existing transport company is the part of the brownfield. Okay, okay, so this is correct. Setting up a new economy to produce transport equipment, setting up new means greenfield, so this will not be part of that. Okay, coming to the third option, that is acquisition of the public sector unit. Acquisition means existing public sector unit is there, the foreign companies are just acquiring them, so this is also a part of the brownfield. Okay, coming to the last option, that is building a storage facility to expand the production capacity. Means you have to build a storage facility, means you have to start from the scratch, so this is the part of the green field. Am I clear? So the option will be 1 and 3 only. Okay, option C. Now coming to the uh, consider the following statement about सर आई ways थिंक and means. आपका स्क्रीन स्टक है और Screen is राइटिंग भी stuck. आपका दिख नहीं रहा है 17 क्वेश्चन पे. Yes, yes, that's why I asked this question. Now let me again, I'm sharing the एक screen, बार please अनशेयर wait. करके फिर से शेयर करो Yes, yes, स्क्रीन. yes. Sir, I suppose I'm not able to mirror my screen in the PC. What is the issue? तो एक काम करो, मुझे होस्ट बनाओ और आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो. पहले मुझे होस्ट बना दो. Okay, okay.
Yes. तो क्या आप अब डिस्कनेक्ट करो और फिर से कनेक्ट करो आप। Yes, yes. I understand. Guys, just 2 minutes. We are coming back. Sorry, I suppose there is a glitch. I'm not able to mirror my screen to my laptop. Okay, so I am connecting myself to the tab, some tab. Okay, so can you please make me host? I'm just doing everything from the tab. I'm not able to mirror my screen to the laptop. Yes, host बना दिया है। Okay, okay. Screen. Okay, start broadcast. Okay. Okay. Can you please confirm if the screen is visible and I'm audible? Yes, visible. Okay, okay, okay. So we have talked about the investments in the brownfield and greenfield. Okay. Now coming to the 19th question, that is ways and means advance. Okay. So coming to this question, ways and means advance is a provision. This is the method through which RBI gives loan, short-term loan actually, short-term loan to central and state government. You know that government, what is the revenue of government? This is the taxes, and there are multiple expenditure that is done by the government. Okay, so what do you to bridge the gap to actually bridge the gap of this mismatch, RBI provides a short-term loan, 90 days loans in the name of the ways and means advance. So coming to the options, ways and means advance in which the Reserve Bank of India provides long-term loan. This is the incorrect option, okay? To the state government, union territory governments, and the central government. This is the wrong statement due to the word long term. Okay, now coming to the second part, ways and means advance is a provision in which the Reserve Bank of India provides short term loans to the state government, just less union government, and the central government. Short term, this is the correct option. Okay, ways and means advance was introduced in
1997, this is the correct statement. Actually, prior to that, there was option of the ad hoc treasury bills. Actually, to bridge the mismatch, government used to release the ad hoc treasury bills through the RBI. So it was introduced in 1997. Okay. Coming to the fourth question, interest rate charged by RBI on the WMA wage and means advance is the same as the bank rate. So this is incorrect option. Actually, what is the interest rate charged by RBI and WMA? That is the repo rate. If you cross that 90 days limit, then the rate charge will be overdraft. Then the amount will be overdraft, and you will be charged plus 2% above repo rate. So in normal case, the repo rate interest rate is charged. So fourth option is also correct. Okay, so 2, 3, and 4. Where is the suppose? Okay, 2 is correct. 3 and 4. Okay. Let me check it. What is the problem? Please wait. I am at which question? 19th question. Okay. Oh, sorry. This is the incorrect now because bank rate is given. I am so sorry for that. So 2 and 3 is correct only. Okay. C option is correct. Okay. Now coming to 20th question. Okay. 20th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं. 20th क्वेश्चन हमारा क्या है? बैंक के कुछ नॉर्म्स एक्चुअली बैंक्स के लेंडिंग नॉर्म्स थे. द क्वेश्चन हैज बीन कम फ्रॉम दैट पार्ट. सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सबसे पहले एक्चुअली वी हैव टू mark, we have to link it with the year of introduction. Okay, first of all, the thing came was that in 2003 benchmark prime lending rate. What was that thing? What was this thing? That the bank used to set benchmark of the prime customers. For example, Reliance, for example, Tata, they are the prime customers. But what was the lacuna in that? Bank usually provide lending below to that lending rate also to the large corporates. So this was the issue with it. After that, the base rate has been come. Base rate आया उसके बाद 2010 में, 2010 में base rate आया. Base rate में what was the provision in that base rate? That what bank would be do that after occurring the expenses like the operation cost and all the things, there's the negative carry on the CRR, everything, they will fix a percentage of the spread and they will give loan. But there was here was also the lacuna that there was no uniformity, so this was also gone. So after that, there came out the marginal cost of fund based lending rate. Like they have to just confirm the spread will be fixed, and marginal cost of fund will be marginal will vary as per the situation in the economy, and accordingly their lending rate would get changed. ये सब क्यों आ रहा था? ये सब इसलिए आ रहा था ताकि जो आरबीआई अगर कोई चेंजेस लाती है तो ताकि दैट चेंज कैन बी ट्रांसमिटेड टू द कस्टमर्स एज वेल. लेकिन इसमें भी लक्यूनास थे. देन वी केम विद द कांसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट. दिस वाज introduced in 2019. What is the provision in this? That you have to link your lending rate with some external benchmark. After then you have to just give the spread. For example, अभी आपको मान लो रेपो रेट अब 4%, 5% है और आपका रेपो रेट 2, आपका स्प्रेड 2% है, तो आप 7% देंगे सबसे कम लोन. अगर रेपो रेट अगर 4.5 हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली 6.5 हो जाएगा. ओके, दिस वाज द कॉन्सेप्ट कि अगर जो भी आरबीआई चेंजेस ला रही है इकोनॉमी में, दैट चेंजेस कैन बी transferred to the customers also. So what would the correct option? 2016 is 3, okay, and 2010 is 4, 3, 4, and 2, 1. 3, 4, 2, 1. B option is the correct option. Okay. So now coming to the 21st question, special drawing right. You know, अभी हमने वेज एंड मीन्स एडवांस के बारे में पढ़ा है. वेज एंड मीन्स एडवांस का ही ये स्पेशल वर्जन है. स्पेशल वर्जन ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांस. वेज एंड मीन्स एडवांस में यू डोंट हैव टू पुट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, जिस वे इसके थ्रू भी आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है. बट द कंडीशन इज दैट इट इज सिक्योर्ड. Secured means you have to put government security as the collateral. Okay, तो इसमें जो हम अब स्टेटमेंट को पढ़ते क्या है? It makes provision of a short term loan. It is very good loan to the RBI, to the state government, union government against government securities. मैंने क्या बोला? ये secured loan है. Okay, so this statement is correct. Interest rate charged upon the RBI, it is the same as repo rate. Okay, ये गलत है. मैंने आपको क्या बताया था? Ways and means advance में हम सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका क्या है? रेपो रेट से लिंक होता है. ओके, तो इसमें हम सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इसका तो ऑब्वियसली कम होगा. ओके, स्पेशल ड्राइंग राइट
the interest rate charged on this is I suppose 1 to 2% less than repo rate. Okay, इसके बाद मैंने आपको बताया था जब 90 डेज क्रॉस हो जाता है तो क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट हो जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, रेपो रेट प्लस 2%. ओके, दिस इज द थिंग. तो इसमें क्या है, दिस इज बिलो द रेपो रेट होना चाहिए, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, it can be availed by the state government, union territory government only after exhausting the normal WA. normal WA को एक बार बताओ, सबसे पहले तो आप इसको एग्जॉस्ट करोगे, क्यों, क्योंकि इट इज प्रैक्टिकल डेट जिसमें आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा. उसके बाद ये फर्स्ट ऑप्शन होता है, ये सेकंड होता है, एंड देन ये थर्ड, मींस थर्ड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 ओनली. ओके, तो 21st का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी. ओके, नाउ कमिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आ जाते हैं. ओके, published by the Niti Aayog, you know that we have to talk about the 2023-2024 report. Which one of the following statements has a lower value SDG score than the All India score? All India का score आपका क्या था? You know, the national average was 71. नीति आयोग की रिपोर्ट्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, from this part the question has came. Okay, तो हमें ये देखना है, it is the just static and factual question. Okay, 71 was the national average. सो हमें इसमें क्या करना है, जिसके कम है, लोअर. ओके, तो महाराष्ट्र का चेक करते हैं. महाराष्ट्र का क्या था, महाराष्ट्र वाज 73. एंड व्हाट अबाउट द राजस्थान, राजस्थान का स्कोर था 67. एंड तेलंगाना एंड गुजरात बोथ स्कोर 74. सो नेशनल एवरेज से कम किसने स्कोर किया है, राजस्थान ने. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, राजस्थान. ओके, now coming to the union budget question, consider the following statement in the context of the union budget 2026 and 2027. Okay, so what we have to do, यूनियन बजट से हमें क्वेश्चन बताना है. द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टिमेटेड टू द 11.2% ऑफ द जीडीपी. ये एक बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इट इज द करेक्ट क्वेश्चन. मतलब जो भी ग्रॉस टैक्स गवर्नमेंट को आएगा उसमें गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था, इट विल बी अराउंड 11.2% ऑफ द जीडीपी. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लेस देन द इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू. एक बात हमेशा याद रखना, अभी तक में डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर है हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, इट इज ऑलवेज ऑन द हायर एंड देन द इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर अराउंड 4.3 to 4.9% है ऑफ द जीडीपी, एंड द डायरेक्ट टैक्सेशन का रेवेन्यू जो शेयर है 6.9% ऑफ द जीडीपी है. तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ कमिंग टू द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर. इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लोअर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर. लोअर आया. यू नो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसको गवर्नमेंट यूज टू एक्सपेंड ऑन एसेट क्रिएशन. ओके, ऑन एसेट क्रिएशन, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया या कुछ हो गया. व्हाट अबाउट द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर? Effective capital expenditure, what is this? This is nothing but the capital expenditure above plus grant given for the creation of capital asset to the states. तो इसमें कुछ भी प्लस हो रहा है तो ये हमेशा ज्यादा होगा. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, नाउ कमिंग ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द टैरिफ रेट ऑन ऑल देखो, दो ऑल इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट विच यूजुअली यूपीएससी एग्जाम में गलत होता है. बट ऑल ड्यूटेबल गुड्स इंपोर्टेड फॉर पर्सनल गुड्स विल बी रिड्यूस फ्रॉम 20% to 10%. लेकिन आप अगर यूनियन बजट सुनेंगे इस साल का फाइनेंशियल ईयर 27 का, तो वहां पे आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम हैज क्लियरली रिपीटेड दैट द ऑन ऑल द ड्यूटेबल गुड्स फॉर द पर्सनल यूज will be all, they have actually repeated this term, all will be reduced from 20% to 10%. So this statement is correct. So correct option will be option 1 and 4 only. So D will be the correct answer. Okay, now coming to the last question of the economy. What is this last question? Which one of the following systems has been adopted the government of India to improve cash management? Cash management of which body? Government of India. Okay, to reduce idle cash. Idle cash, the cash has been just kept idle. Okay, enhancing the transparency and strengthening the expenditure efficiency. Okay, as the public finance management. Okay, now coming to the options, paper based clearing system. You know what is this paper based clearing system? This is not the government of India something. This is done by in the banking sector. Actually, it is for the check clearance. Okay, it is a check clearance system. Okay, so this is not this, so option would not be this. Okay, decentralized account management system. There is nothing such a scheme of decentralized account management system. Okay, so it is not any initiative, so this option will be correct. Now coming to the D option, asset management and tracking system. What is this?
This system is nothing. There is nothing such initiative from this name. So option C is correct. What is this just-in-time fund release system? What is this system? For example, the government will release the fund. They will release the fund. They will release the fund. Okay, when there will be requirement. Okay, for example, the Ministry of Transports today needs funds, so that fund will be released today, not a day before that, because they don't want to keep fund idle. होता क्या है, किसी भी बहुत सारी मिनिस्ट्री में होता है फंड आइडल पड़े रहते हैं, और बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है जहां पे एक्सपेंडिचर पूरा हो जाता है, देन दे हैव टू बोरो फ्रॉम द मार्केट. It was done for this purpose. So this is the just in time fund release system. ये किस लिए? एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए. ओके, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए. ओके, okay, now we are done with the economy part. I hope you all are clear with the questions that came. Now coming to the polity section. Okay, polity section in group in this set starts from question number 41. Okay, so after 30-second break we will start with the polity section. Okay, so चलो let's start with the polity section. Okay, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे अब हम करते हैं सवाल. ओके, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे काफी बार क्वेश्चन आया है. एक्चुअली यूपीएससी सिविल सर्विस में भी काफी बार आ चुका है. सीएपीएफ के भी पीवाईक्यूज में आप देखो कि काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है. ओके, तो इसमें बोला गया है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय ह्यूमन राइट्स जनरल असेंबली ने इसको 1948 में अडॉप्ट किया था. वो क्या नहीं इंक्लूड करता है? व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड? राइट अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन. ओके, प्लीज वेट. ओके, okay, you know this is given in the article 9 of that. Okay, and a right against slavery ke against may be right, this is given in article 4. Okay, right against inhuman or degrading treatment, तो सारी चीज पॉजिटिव है. Okay, right to rest and leisure, rest करना भी एक right है. It is given in section I suppose 24. Okay, so all the statement, ये मुझे लगता है this is the doubtful question and which will be omitted. This is the doubtful question, क्योंकि एक तो आप जनरल एप्टीट्यूड से भी इसको कर सकते थे कि जब भी कोई भी चीज पॉजिटिव टर्म में होता है तो यूजुअली यूपीएससी के वो आंसर वनरेबल सेक्शन के लिए सही होते हैं. तो ये सारे वनरेबल सेक्शंस हैं. स्लेव्स, इनह्यूमन ट्रीटमेंट किसी को देना, एंड राइट टू रेस्ट एंड रीजल दिस थिंग्स. तो दिस इज द डाउटफुल क्वेश्चन एंड इट वुड बी ओमिटेड. लेट्स सी व्हाट यूपीएससी विल डू. तो आई सपोज ये ओमिट कर दिया जाएगा क्वेश्चन. दिस इज द डाउटफुल क्वेश्चन. ओके, तब तक हम इसको रखते हैं. ओके, now coming to the 47nd question. Okay, we have to just match the things. Okay, the thing is about the 102nd amendment. Okay, 103rd amendment, 104th and 106th amendment. Okay, चलो एक्चुअली आपको भी पता होगा, आपको बोला जाता है 100 अमेंडमेंट से चीजें याद करना ज्यादा जरूरी है. 100 अमेंडमेंट क्या था? इट वाज अबाउट द लैंड बाउंड्री एडजस्टमेंट सिस्टम विथ विच कंट्री? बांग्लादेश. ये आपका कब आया था? इन 2015. ओके, देन 101st, it was about the GST. It came in year 2016. Okay, and then what about the 102nd amendment? It was about the giving constitutional status to National Commission for Backward Classes. Okay, now coming, sorry. Okay, now it was introduced in 2019. Okay, now coming to 104th amendment. It was introduced in 2020. It was about the extending the reservation, political reservation for the SC and ST, and actually एंग्लो इंडियन के भी जो हमने रिजर्वेशन था, वी जस्ट स्ट्राइक डाउन दैट रिजर्वेशन फॉर द एंग्लो इंडियन एंड वी एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन system in the political domain. Okay, for the SC and ST class in the Lok Sabha and the state legislative assembly. Okay, and what about the 105th amendment? It was actually based on this thing that central government actually after creation of the NCBC took the right of creation of the list of the socially and educationally backward classes, but after some apprehension from the state government and from the citizen of India, they again transferred this power to the state government to prepare the list of the social and educationally backward classes. And 106, it is the very famous constitutional amendment act. It was about the giving the 1/3 reservation to women. Okay, in Lok Sabha and state legislative assembly and union territory state legislative assembly. Okay, it was given for that purpose. Okay,
सो अब हम इसको करते हैं 100, sorry, I just missed the 103rd na. Okay, 103rd about was the extending the reservation system for the economically and backward classes. Okay, economical weaker section from the general category citizens. Okay, so 102nd was about the NCBC creation. Where is NCBC? Okay, so this one is correct. Okay, A का होगा first. Now coming to 103rd, it was about the EWS section. So third, B का 3. Okay, 104th. What was the 104th? 104th was the extending the reservation system to the, okay, extending the reservation. Yeah, abolition the reservation. मैंने आपको बताया था abolition भी किया था हमने reservation of Anglo Indians. So this was from the 104th. So 2. And coming to the last, the 106, which is the very famous, that is giving 1/3 seat, 33% seat for the women in the Lok Sabha and the state legislative assembly. So our correct option will be 1, 3, 2, and 4. 1, 3, 2, and 4. So C will be the correct option. Okay, very good. So coming to the next question, that is about the PIL. You know that PIL in India was pioneered by two justices, Justice P.N. Bhagwati. आप लोग ये सब पढ़ते हो बेसिक उसमें, एंड जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर. ओके, तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. तो इसमें क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या. इन इंडिया इट अडहेयर्स, PIL क्या अडहेयर्स करता है टू द स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी. You know what is this doctrine of locus standi? It tells that कि जो पर्सन एग्राइव्ड है, मतलब जो ओनली द एग्रेव्ड पर्सन, मतलब जिसको कंसर्न है, ओके, मान लो जिसके राइट्स का एक्चुअली जिसके राइट्स वॉलेट्स हुए हैं या जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, वही पर्सन क्या कर सकता है, कोर्ट में स्टैंड कर सकता है. ओके, तो ये तो है था ही नहीं, तभी तो PIL वाज वेरी फेमस कि आप किसी के बेसिस पे ऑन द लार्जर पब्लिक गुड के बेसिस पे यू कैन फाइल द PIL इवन दो यू आर नॉट द एग्राइव्ड वन. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, लेटर्स टू द जज मे, एक्चुअली आपको पता होगा मे, सम, दीज ऑप्शंस आर यूजुअली करेक्ट. ओके, लेटर टू द जज मे बी ट्रीटेड एज पेटिशनर. और उस टाइम पे ऐसा होता था, बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स, सुप्रीम कोर्ट जब PIL इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत many postcards used to come to Supreme Court, many letters were written to the Justice P.N. Bhagwati. Those all things were treated as the PIL. Okay, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा. और मे से भी आपको लग रहा होगा ये ऑप्शन सही है, यू कैन जस्ट करेक्ट इट बाय द एप्टीट्यूड. ओके, MC Mehta वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया was a PIL that expanded the scope of Article 21 and Article 32. MC Mehta आपको पता होगा, MC Mehta कौन थे, एक एनवायरमेंटलिस्ट लॉयर थे. इन्होंने एनवायरमेंट के लिए बहुत सारे PIL वगैरह फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में. तो आर्टिकल 21 में क्या है, यू नो दैट आर्टिकल 21 ऑल्सो comprises that right to healthy and the clean environment. Okay, which is the part of the Article 21. तो obviously Article 21 expand हुआ. And what was the Article 32? Article 32 was कि जिसको anyone can file on the basis of the collective good. Okay, तो Article 32 भी expand हुआ. Okay, so this option is also correct. So correct option will be option B, 2 and 3 only. Okay, now coming to the following statement to the election of the president. Actually it was the anticipated question क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर बहुत ज्यादा न्यूज में थे इस साल. तो दिस वाज द एंटिसिपेटेड क्वेश्चन. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में है. बाय कन्वेंशन द सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और द सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा इज द अपॉइंटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर. यू नो ये बाय कन्वेंशन है. यू नो देयर इज अ रूल known as the President's and Vice President Election Act of 1952. President and Vice President Election Act of 1952. इसमें सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी को भी किसी भी बॉडी को एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है. तो लेकिन कन्वेंशन के थ्रू हम लोग जनरली सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा दोनों को रोटेशन में, मान लो अगर 2027 के लिए हमने राज्यसभा को अपॉइंट किया, लोकसभा को अपॉइंट किया, तो फिर हम 2032 के इलेक्शन में हम लोकसभा को अपॉइंट करेंगे. ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन. ओके, मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज मतलब दोज हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड आर नॉट बाउंड बाय द पार्टी विप. आपको पता होगा विप are not issued neither in the case of the president election nor in the case of the vice president election or nor in the case of the Rajya Sabha election. Okay, और president और vice president के केस में तो it is done in the through the secret voting. Okay, secret ballot voting. Okay, so this option is correct. The provisions of notas are applicable. You know there is no option of the nota in the president and vice president election, so this option is incorrect. So correct option will be option A, 1 and 2. Okay, now coming to the 45th question. Okay,
What is this 45th question? 45th question is about which of the following pairs is wait. Okay. Which okay. You know that we have to mark the correct option डिपार्टमेंट और उनके मिनिस्ट्रीज को लेके ओके सो इसमें पूछना है कि हमें कौन जो है वो सही मार्क दे ओके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट्स के मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर लेट्स सी आगे क्या क्या है और इसमें नॉट का ऑप्शन है यू नो तो मिनिस्ट्री ये आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशन वेलफेयर ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ओपीओएस ओल्ड पेंशन स्कीम के भी लिए तो ये किस में आता है ये आपके आता है मिनिस्ट्री ऑफ comes under Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions. नाम से ये पता चल रहा है ओके तो ये तो ऑप्शन का लगता है लेकिन आगे भी देखते हैं चलो नॉट का ओके तो ये नॉट के हिसाब से ये फिर हमारा सही होना चाहिए तो लेट्स सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता क्या डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंटल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ये सारे आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है ओके नाउ कमिंग टू द डिफेंस द डिपार्टमेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन नाम से ही लग रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज भी लैंग्वेज दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द गृह मंत्रालय ओके एंड ये एक्स सर्विसमैन इज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नाम से भी सही लग रहा है ओके द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या था डिफेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स ये भी नाम से सही लग रहा है एंड इट इज ऑल्सो ऑल दीज थ्री आर करेक्ट ओके यही है जो इनकरेक्ट मैच हो रखा है तो आपका क्या होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके नाउ कमिंग टू द 46 okay which one of the following subject is not included you know not included in the ninth schedule इसको आपको पता है you don't have to actually rote learn all these things इसको हम थोड़ा creativity से भी कर सकते थे and through the basic aptitude like you know ninth schedule was included in the judicial review किस केस के थ्रू after the IR कोहेलो केस ऑफ 2007 तो एक बार बताओ 2007 के बाद में किसी भी चीज को 9 शेड्यूल में डालने का कोई सिग्निफिकेंस होता कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता ओके तो 1969 ये सही लग रहा है हो सकता है लेट्स सी आगे देखते हैं ये भी 1972 हो सकता है डाल दिया हो क्योंकि 9 शेड्यूल में क्या प्रोविजन है दोज लॉ that would be put under the 9th schedule those are immune from the judicial review तभी तो 9th schedule लाया गया था 1970 ये भी करेक्ट हो सकता है लेकिन एक बार बताओ 2019 में हम कोई भी लॉ को पास कर रहे हैं उसको 9th शेड्यूल में डालने का फिर कोई सिग्निफिकेंस है देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ 9th शेड्यूल एज ऑफ नाउ क्यों आईआर कॉलेज में हमने क्या बोला था 2007 में ऑल दोज एक्ट्स व्हिच आर पास्ड आफ्टर 1973 में क्या हुआ था केशवानंदा भारती केस में जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था हमारा उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू को हमने अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन माना था ओके तो 2007 में जब ये केस आया जजमेंट आया तो उसके बाद में देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ पुटिंग एनी एक्ट इनटू द 9th शेड्यूल तो इट वाज अ बेसिक एप्टीट्यूड ओके ऑल दीज a part of the 9th schedule and this is not included in the 9th schedule okay अब हम आ जाते हैं which one of the following statement in respect to the north eastern council is correct देखो दो चीज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं देयर आर टू बॉडी फर्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ओके first one is the north eastern council and what about the second body is that is the interstate council interstate council is the constitutional body which is mentioned under article 263 okay which is mentioned in article 263 और नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल हमने बनाया है इट इज पास्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट दैट वाज पास्ड इन 1971 ओके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के डेवलपमेंट के लिए हमने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को पास किया था स्पेशली फॉर द डेडिकेटली स्पेशल व्हीकल for the special development of the northeastern region we passed the special northeastern council act in 1971 and north state interstate council it is mentioned in article under article 263 in the constitution of India now coming to the facts of the statement the council is the nodal agency under the ministry of home affairs आपको पता है जब ये स्टार्टिंग में आया था तो it was under the ministry of home affairs लेकिन जब से हमने इसको बनाया था कौन सा Ministry of North Eastern Ministry of Development of North Eastern Region okay MOD NER
मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो अब ये उसके अंदर आता है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओके, हमें करेक्ट मार्क करना। ओके, अब आगे देखते हैं क्या, द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 7 सिस्टर प्लस 1 सिक्किम। ओके, तो यहां तक तो ठीक लग रहा है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड किया यूपीएससी ने, अलॉन्ग विद 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी एग्जामिनर जब ऐड कर रहा है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट द ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। यहां तक में अगर रहता तो ये करेक्ट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गया है, तो दिस मेक्स दिस स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटिंग सच मेंबर्स इन द दिस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ओके, तो ये ऑप्शन आपका फिर से इनकरेक्ट हो जाता है, कि हाफ पार्ट इज करेक्ट एंड हाफ पार्ट इज इनकरेक्ट। ओके, द काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1971 बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो सही लग रहा है। ओके, नाउ सी दैट्स क्वेश्चन, मणिपुर वाज एडेड एट द 8th स्टेट, यू नो दैट मणिपुर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर जब ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इनफैक्ट व्हिच स्टेट वाज द which state was the latest entry in this council? That was Sikkim, that was added in 2002. Okay, Manipur was the founding and the original founding member of this. Okay, now अब हम क्या करते हैं, एक एक को पालन केस I'm so sorry. Okay, एक एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इट इज वेरी फेमस केस। ये क्या था, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ से बोला गया था, कैन वी टेक फंडामेंटल राइट्स। ओके, कैन वी क्या बोलते हैं, कैन वी रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स जस्ट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर्स। ओके, तो इसमें माना गया था, द कोर्ट गेव नैरो ओपिनियन दैट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर्स एज पर द एक्ट, as per the ordinance, as per the law, we can also take back the, we can also limit, restrict the fundamental rights. So you know this is correctly matched. Okay, KM Nanavati, what was that case, you know, that is KM Nanavati versus state of Bombay. Actually इसमें you have to use I will say you have to use elimination also. Let's check ये first. Okay, so A और B हमारा correct हो जाता है। फिर मेनका गांधी केस इज वेरी फेमस केस which was about to go abroad, क्योंकि उनका पासपोर्ट उन्होंने जब्त कर लिया था। तो 19A में क्या है, फ्रीडम, फ्रीडम, देयर आर फ्रीडम प्रोवाइडेड अंडर फ्रीडम एंड लिबर्टीज। ओके, तो ये 19A तो था ही, एंड अलोंग विद दैट आर्टिकल 21। ओके, तो ये तो सही लग रहा है। तो सी का 4, सी का 4 कहाँ पे है, सी का 4 इज देयर। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपको ये दोनों केस अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, आप फेमस केसेस के थ्रू भी इसको कर सकते थे। तो ऑप्शन बी हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब भी हम बाकी दो ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इससे तो हमें लग रहा है कि ओके 1 और 4, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, 1 एंड 4, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, हमें पता चल चुका है। लेकिन हम बाकी को दो को भी देखते हैं। ओके, बाकी दो का केएम नानावती केस, केएम नानावती केस क्या था एक्चुअली, सम सेंटेंस वाज गिवन बाय द कोर्ट, जिसको गवर्नर ने क्या कर दिया था, उसको चेंज कर दिया था, उसके सेंटेंस के नेचर को। तो कोर्ट ने इस केस में पाया कि गवर्नर के जो आर्टिकल 161 के अंदर क्लेमेंसी पावर्स है, यू नो दे आर द पार्डनिंग पावर, क्लेमेंसी पावर हम जो भी इसको बोलते हैं। ओके, इसके अंदर बोला गया कि अगर जो भी केस अगर पेंडिंग है, केस में जिसका फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया है, तो आप उसमें क्लेमेंसी पावर का यूज नहीं कर सकते हो। एंड द क्लेमेंसी पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट डिस्क्रिशनरी, गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ये दो जजमेंट आए थे, तो इससे ये पता चलता है सेकंड का जो हमारा आंसर होगा 3। नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, श्याम नारायण चौस्की केस, ये बहुत ज्यादा न्यूज, मतलब ये न्यूज में था कुछ टाइम पहले, यू नो। इसमें आपको पता होगा, इन द सिनेमा हॉल्स नेशनल एंथम हैज टू बी संग, लेकिन नेशनल एंथम ये कंपल्सरी नेचर का होगा या वॉलेंटरी नेचर का होगा। इट वाज प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट, एंड जिसमें कोर्ट ने दो ओपिनियन दिए। In 2016, the court find out that there is mandatory provision that you have to stand for the national anthem in cinema hall before the movie. Okay, लेकिन 2028 में court relaxed some measures, और court ने बोला government of their respective states along with the cinema halls have the right to decide on this issue. Okay, तो ये हमारा नेशनल एंथम से है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन 1 3 4 एंड 2, 1 3 4 एंड 2। ओके, लेकिन हम सिर्फ ऑप्शन ए और सी से भी हम ये आंसर निकाल सकते थे। ओके, now coming to 49th question. Okay, what is this 49th question? 49th question is which of the following statement in respect to the nature of the federal system? Federal system के बारे में बताना। Okay, since the states had an independent existence prior to the formation of the federation, इसे बोला गया है, जो हम हमने इंडिया आर्टिकल 1 जो हमने ऐड किया, इंडिया दैट इज भारत shall be union of the state,
तो वही बताया गया, लेकिन हमारा यूनियन इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएसए यूनियन। तो चलो आगे पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्टिंग द स्टेट्स राइट सिमिलर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। आपको पता है कि फेडरल सिस्टम, वी आर क्वासी फेडरल, वी आर नॉट प्योर फेडरल सिस्टम, यूएसए इज द प्योर फेडरल स्टेट। तो सिमिलर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये नहीं है, क्यों? वी हैव मल्टीपल यूनियन फीचर्स लाइक इमरजेंसी पावर, लाइक द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, लाइक देयर आर मल्टीपल प्रोविजंस लाइक द कॉन्करेंट रिस्क, लाइक द रेजिडुअरी पावर। ओके, चलो सेकंड ऑप्शन आई गया रेजिडुअरी पावर पे। द रेजिडुअरी पावर्स आर रिजर्व्ड विद द स्टेट्स, ये तो सीधा ही गलत है। यू नो द रेजिडुअरी पावर्स आर वेस्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। मान लो हमने शेड्यूल 7 में बहुत सारे हमने लिस्ट रखे हैं, सेंट्रल यूनियन लिस्ट रखा, स्टेट लिस्ट रखा और कॉन्करेंट लिस्ट रखा। लेकिन मान लो जैसे अभी एआई आ गया, या मान लो कोई भी नई डेवलपमेंट आ जाती है, तो वो पावर, या कंप्यूटर्स उसके बाद में आए थे, तो वो पावर किसके पास आएगा? तो दीज थिंग्स कम्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। और ये हमने फीचर कहां से लिया था? वी टुक दिस फीचर फ्रॉम कैनेडा। ओके, ये क्या लिया? रिजर्व विद द स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। ओके, यूएसए में ये है, बट दीज आर यूनियन। ओके ओके, नो नो नो, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि इसमें यूएसए के बारे में बोला गया। यूएसए में रेजिडुअरी पावर इज स्टेट, क्योंकि मैंने क्या बताया था, यूएसए इज अ प्योर फेडरल स्टेट, और इंडिया में ये यूनियन के पास में। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर बात हो रही है स्टेट की, ये यूएसए के रेफरेंस में हो रही है। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द इंडिया, इंडिया में यूनियन लिखा है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फॉलोड द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टिंग द रेजिडुअरी पावर। आपको पता है रेजिडुअरी पावर जो हमने, या हमने क्वासी फेडरल सेंट्रल जो फीचर दिया है, वो हमने कहां से लिया? फ्रॉम द कैनेडा। We have just inspired our constitution from the Canadian constitution, okay, in terms of the residuary power. Irish constitution से क्या लिया हमने? Irish constitution से हमने लिया directives DPSP, okay, directive principle for the state policies. Okay, so this statement is also incorrect, so option correct will be 2 only. Okay, B option. Okay, now coming to the Viksit Bharat Ji Ram Ji, it was very much in news. ये क्यों आया? Replacing मनरेगा, MG नरेगा। Okay, MG नरेगा, एमजी नरेगा या एमजी नरेगा। ओके, बोथ आर सेम थिंग। इसके अंदर में क्या है? 125 डेज की इंप्लॉयमेंट हमने दे रखी है। ओके, तो इसमें एक्चुअली इट वाज वेरी मच इन न्यूज, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम दैट पोर्शन। ओके, इट लिंक्स वेज इंप्लॉयमेंट, वेज इंप्लॉयमेंट मतलब जो पैसा मिलेगा उनको, ठीक है, विद ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है पहले एमजी नरेगा में ये एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था? लोग कुछ नहीं करते थे, दे यूज टू जस्ट डू एनीथिंग, दे यूज टू जस्ट डिग द होल्स, दे यूज टू डू एनीथिंग एंड इन द नेम ऑफ द जस्ट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। कोई भी ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें हमने क्या किया? 4 प्रायोरिटी एरिया में ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। ओके, 4 प्रायोरिटी एरिया कौन सी है? पहला तो वाटर सिक्योरिटी। वाटर सिक्योरिटी के लिए कोई भी मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाते हैं, ये कुछ भी बनाते हैं। उसके बाद क्या है? लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया? मान लो कोई भी हमने स्किल सेंटर बना दिया। ओके, मान लो हमने क्या किया, कुछ भी हमने कुछ भी डेवलपमेंट हमने वो बना दिया, मान लो कुछ हमने वो कर दिया, स्टोरेज फैसिलिटी बना दी। ओके, उसके बाद में क्या है? कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मान लो रोड कनेक्टिविटी हमने बना दी। ओके, एंड द लास्ट इज टू एडेप्टेशन मेजर्स फॉर एडेप्टेशन मेजर्स फॉर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। मान लो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के लिए फॉर एग्जांपल कहीं पे साइक्लोन बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, तो उसके लिए हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, फ्लड के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। तो ये क्यों लाया गया? ताकि इसी 4 डोमेन में काम हो, ताकि पूरे इंडिया में एक यूनिफाइड डेवलपमेंट हो थ्रू वी विकसित भारत जी राम जी। ओके, that replace the मनरेगा, okay, by guaranteeing 125 days of employment. Okay, all assets created are aggregated into the विकसित भारत नेशनल रूरल स्टैक डेवलपमेंट। देखो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, 2 एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन पॉजिटिव आपको लग रहा है ना? जितने भी एसेट क्रिएट होंगे वो किसमें जाएंगे? नेशनल भारत विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में जाएंगे। मतलब ये हमने बना रखा है। ओके, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये क्यों लाया गया? ताकि एक यूनिफाइड, मैंने आपको बताया ना, एक यूनिफाइड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट हो सके, हर जगह एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच को लिया जा सके, डेवलपमेंट हो सके। ओके, कहीं कोई भी एरिया बैकवर्ड एरिया पीछे की तरफ में ना आ जाए। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट सीम्स टू बी करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कमिंग टू द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सबसे पहले तो आ जाता है इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। ये तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जुडिशियल सिस्टम को एक्सेस देना इज द पार्ट ऑफ द जज। आप अप्रोच करें कोर्ट को फॉर द जस्टिस,
ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ओके इट इज करेक्ट। ओके, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ भी आपको पता है, यू हैव टू जस्ट फॉलो द रूल ऑफ द लॉ एंड द लॉ शुड बी जस्ट एंड द लॉ शुड बी इक्विटेबल एंड लॉ जस्ट बी बेस्ड ऑन द इक्विटी, लाइक फॉर एग्जांपल द रिजर्वेशन सिस्टम। ओके, तो रूल ऑफ लॉ में क्या बोला गया था, ये कब लाया था, आपको पता होगा, राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस हुआ था, वेयर इन इंदिरा गांधी ने क्या बोला था, इलेक्शंस ऑफ द वाइस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, ये सब किसमें नहीं आएंगे, दोज विल नॉट बी कम अंडर जुडिशियल रिव्यू। लेकिन कोर्ट ने क्या इसको किया, कोर्ट ने बोला नो, judicial review is the part of the basic structure doctrine and it should not be excluded from that। तो ये राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस में आया था, रूल ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड। ओके, अब रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोला जाता है, फॉर एग्जांपल फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस में बोला गया था। लिमिटेशन अपॉन द अमेंडिंग पावर, ये तो बहुत ज्यादा है कि लिमिटेशन होना चाहिए किसमें, अमेंडिंग पावर की, कुछ भी कोई अमेंड नहीं कर सकता। ये हमारे 2-3 केस में आ रखा है, केशवानंद भारती केस में आया था, तभी तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, केशवानंद भारती केस। ओके, उसके बाद में मिनरल मिल केस में भी बोला गया कि the amending power of the constitution is limited, they can't alter the basic structure doctrine, basic structure are the moral value or the core value of the constitution, or the core values that kept that those member of the constituent assembly kept in their mind। okay, so all options seems to be correct, so D is the correct option। okay, अब हम आ जाते हैं इस पे, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CEDAW, CEDAW। ठीक है, तो ये कन्वेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, PYQ भी बहुत आ रखे हैं इसमें, एक्चुअली प्रायर यूपीएससी पेपर्स में आप देख सकते हो। द कन्वेंशन वाज द कल्मिनेशन ऑफ मोर देन 30 इयर्स। एक्चुअली ये बहुत ही ट्रिवियल स्टेटमेंट है, बट व्हाट यू कैन डू, दिस इज द वेरी फैक्चुअल स्टेटमेंट, और दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब बोला गया, ये जब कन्वेंशन आया तो 30 साल की कड़ी मेहनत लगी टू फ्रेम एंड टू रीच ऑन दिस कन्वेंशन। ओके, द कन्वेंशन वाज द कल्मिनेशन ऑफ मोर देन 30 इयर्स ऑफ वर्क बाय द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ओके, चलिए ठीक है। द कन्वेंशन डिवोट्स मेजर अटेंशन टू वीमेन प्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको मैंने बताया क्या, कुछ भी वनरेबल इशू होगा, कुछ भी सेंसिटिव इशू होगा, वनरेबल ग्रुप के बारे में होगा, ऑल थिंग्स आर करेक्ट यूजुअली इन यूपीएससी, यूजुअली मैंने बोला इफ यू गो बाय 90% रेशियो। ओके, ये हो गया आपका। ओके, तो वीमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने मेजर अटेंशन दिया, या इट इज गुड पार्ट। ओके, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन इज मॉनिटर्ड बाय कमिटी ऑन ह्यूमन राइट, ये गलत है। कौन सी कमिटी मॉनिटर करती है, ये आपकी CEDAW की खुद की कमिटी है, वही इसको मॉनिटर करती है, they are not delegating this task, so third option is incorrect, so correct option will be option 1 and 2, A will be the correct option। okay, so coming to this 53rd question, which one of the following states has the highest allocation of seats in the council of state? Rajya Sabha के elections हुए थे last year and it was very much in news, so it was the anticipated question। allocation of seats to the Rajya Sabha किसमें mention है, it is mentioned in schedule 4th। okay, शेड्यूल 4th में मेंशन है, और इसमें क्या क्या मेंशन आपको अब देखना है। वेस्ट बंगाल के कितनी सीट्स हैं, 16 सीट्स हैं, कर्नाटका की 12, 10 and 18 seats। okay, these are the seats that are mentioned in that is mentioned in okay schedule 4, that is allocation of seats to the Rajya Sabha। तो highest किसके पास है, तमिलनाडु, so D will be the correct option। factual question है basic। okay, which of the following statement about the human rights are correct, human rights के बारे में लिखना है। okay, आपको मैं बताता हूँ, human rights को हमने बेसिकली, आप उसको भी देख सकते हो, पढ़ते हो डिफरेंस बिटवीन द 19th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्चुअली रिफॉर्म्स एंड द 20th कॉन्स्टिट्यूशनल 19th सेंचुरी रिफॉर्म एंड द 20th सेंचुरी रिफॉर्म, पढ़ते हो ना। सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे इंडिया में भी 19th सेंचुरी में बेसिक राइट के बारे में बोला कि कास्ट हटना चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए, बेसिक राइट, इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, वीमेन को भी डिग्निटी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जैसे 20th सेंचुरी में एंटर किए, हमने किस राइट को डिमांड किया, हमने डिमांड किया कि पॉलिटिकल राइट होना चाहिए, इकोनॉमिक राइट होना चाहिए, लाइवलीहुड राइट होना चाहिए। तो ऐसे ही बेसिक प्रिंसिपल राइट्स भी हमारे इवॉल्व हुए। देयर आर बेसिकली 3 जनरेशन ऑफ राइट। ओके, 3 जनरेशन ऑफ राइट था। पहला जो जनरेशन था, पहला जनरेशन क्या था, पहला जनरेशन तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया, क्या था, राइट टू लाइफ होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या था, लिबर्टी होनी चाहिए, उसके बाद क्या था, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, उसके बाद क्या बोला गया, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फ्रॉम द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। ओके, समझ में आ गया, राइट टू लाइफ होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, फिर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, आर्बिट्री स्टेट कोई भी आर्बिट्री एक्शन ना करे। फिर सेकंड जनरेशन राइट आया, ये हमारा 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स हो गए एक तरीके से। इसके बाद में 20th सेंचुरी में क्या आया था, इक्वल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इसमें भी क्या है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने की बात की गई थी। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब सबको हाउसिंग राइट मिले,
सबके पास में लाइबिलिटी अपॉर्चुनिटीज हों। ओके, उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो गई, फिर एजुकेशन राइट सबको मिले, ये सारी चीजें थी। ओके, इसके बाद हमारा नया राइट आया, थर्ड राइट क्या है, जो कंसोलिडेटेड राइट के बारे में बात करते हैं। जैसे पीआईएल मैंने आपको बताया, पीआईएल क्या फाइल करते हैं, जहां पे बहुत सारे राइट्स लोगों के कंसोलिडेट हो जाते हैं, लाइक कंसोलिडेटेड एंड सॉलिडेटरी राइट्स, कंसोलिडेटेड सॉरी सॉलिडेटरी सॉलिडेटरी राइट या कंसोलिडेटेड राइट बोला जाता है, जहां पे बहुत सारे लोगों के राइट्स हों, जैसे कि राइट टू फ्री एंड क्लीन एयर, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू एक्सेस टू क्लीन वाटर। तो ये सारे क्या राइट हो गए, ये सारे आपके थर्ड जनरेशन राइट है। ओके, अब चलो इस पे करते हैं ह्यूमन राइट। द फर्स्ट जनरेशन राइट्स वाज द ट्रेडिशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। देखो सही है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, मतलब बेसिक राइट्स आपके पास। सेकंड जनरेशन राइट्स क्या है, सॉलिडिटी राइट्स है, नहीं ये क्या थे, थर्ड जनरेशन राइट्स थे। सेकंड जनरेशन राइट्स क्या थे, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में थे, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ओनली वन इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉलिटी। आर्टिकल 21 के बेसिस पे है, मतलब बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये क्या है, इसमें क्या बताया, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या बोला जाता है कि मान लो मैंने कोई क्राइम किया आज, ओके, लेकिन आज वो क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं काउंट होता। मान लो मैंने क्या किया, मैंने किसी का लैपटॉप फोड़ दिया, मैंने चाटा मार दिया किसी को, चाटा तो चलो मारना राइट है। मान लो मैंने पेन तोड़ दिया, ओके, इफ द पेन इज विजिबल टू यू गाइस, ओके, मान लो मैंने पेन तोड़ दिया, तो पेन तोड़ना इज नॉट अ क्रिमिनल राइट टुडे, लेकिन मान लो कल गवर्नमेंट उसको वो कर देती है, एक क्रिमिनल राइट बनाती है, तो वो मुझ पे क्रिमिनल राइट नहीं अप्लाई होंगे, मतलब पोस्ट में जाके, आफ्टर द इफेक्ट, मतलब आज आया तो आफ्टर द इफेक्ट ही वो अप्लाई होंगे। ओके, तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। ओके, तो ये तो सही है। अ लेजिस्लेशन शेल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू मेक अ क्रिमिनल लॉ, मतलब इसे बोलोगे पार्लियामेंट लॉ भी नहीं बना सकती है रेट्रोस्पेक्टिव, ऐसा नहीं है, हमारा जो यहाँ पे ये ट्विस्ट वाला है, यहाँ पे क्या बोला गया, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव आ रहा है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है कि ये अप्लाई कब से होगा, इट इज एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आया? तो लेजिस्लेशन बना सकती है, ओके, दे कैन पास, बट द एप्लीकेशन इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन 1, ओके, 1 ओनली। ओके, करेक्ट ऑप्शन करना यस। तो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर। पेपर की बात करूं तो पेपर वाज, पॉलिटी का पेपर बहुत आसान था, इट वाज ऑन द मॉडरेट टू इजी साइड ओनली, ज्यादा टफ पेपर नहीं था। आई होप 80 to 90% आप क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट मोर देन 90% क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते थे। एंड टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी में एक दो क्वेश्चन को देख रहे जो थोड़े बहुत फैक्चुअल थे, वो भी कंसेप्चुअल और बेसिक क्वेश्चन थे। ओके, यूनियन बजट आप सभी पढ़ते ही हैं, यूनियन बजट ये सारी चीजें हैं, तो ये है थोड़ा स्कोर को याद नहीं रखता है, तो ठीक है। 22nd क्वेश्चन जो है ये थोड़ा बिट फैक्चुअल था। अपार्ट फ्रॉम इट आई एम रेस्टिंग द डिस्कशन ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम माई साइड, सो यस। ओके सर, एनी हाँ, सेक्शन मुझे लेफ्ट? होस्ट बना दो, ओके सेशन ओके एंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी सब हो चुका है। ओके ओके, सो थैंक यू फॉर remaining with us. Okay, okay, sir, you are the host now, so ओके ओके, best of luck to all of you. Hope you all may succeed, you all may able to clear the cut of marks, and may God showers your his blessing or her blessings on all of you. Okay, thank you everyone, thank you sir. ओके, थैंक यू Okay, आदित्य सर। और okay, रेस्ट विल भी अभी 2-3 दिन में हमारी नई आंसर की भी आ जाएगी, तो मेक श्योर करो कि हमने कमेंट में टेलीग्राम का चैनल पिन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे कनेक्ट करो, और बाकी कुछ डाउट रहेगा तो वहाँ पे डायरेक्टली आप मैसेज भी कर सकते हो। नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे हमने देके रखा हुआ है, तो आप वहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो हमें आगे, और जो भी कुछ डाउट रहेगा तो आप व्हाट्सएप पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड बाकी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। आगे अभी जो भी होगा, रिजल्ट जो आएगा हम लोग देखेंगे, कुछ दिनों में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कुछ दिनों में यूपीएससी की भी
ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की वगैरह आ जाएगी, और हमारे आंसर की जो है वो 2 दिन में हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे, तो तब तक आप लोग वहाँ पे कनेक्ट कर लो हमें।